Salam, मेरा नाम अंबरहीम शम्सी, I'm director at the Center of Excellence in Journalism and co-host of नाजुक मोड़ जो आप देख रहे हैं, और साथ मेरे उज़ैर यूनुस है जो अपना तारुफ और प्रोग्राम का तारुफ खुद कराएंगे। मेरा नाम उज़ैर यूनुस है, डायरेक्टर ऑफ द पाकिस्तान इनिशिएटिव एट द अटलांटिक काउंसिल। आज की एपिसोड में हम बात करेंगे एक बड़ी अपॉइंटमेंट की, जिस पे पूरा मुल्क जो है पाकिस्तान, बल्कि पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान को जो लोग फॉलो करते हैं वो भी फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या होगा। जो है आर्मी चीफ का अपॉइंटमेंट, उसके साथ साथ डिफ़ॉल्ट रिस्क की इस हफ्ते काफ़ी बातें हुई। डार साहब ने आज जब हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या वीडियो कॉन्फ्रेंस भी की, जो कहा कि डिफ़ॉल्ट रिस्क नहीं है। तो हम उस पर बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने वाला है या क्या मईशत के अंदर मसाइल हैं। और फिर हम बात करेंगे, और एक इंटरव्यू आपके लिए है in terms of censorship of films and media in Pakistan. Amber has done a fantastic interview related to the Joyland movie, जिसके ऊपर इस पूरे हफ्ते जो है एक बहस चलती रही कि क्या ये दिखाई जाएगी पाकिस्तान में या नहीं। लेटेस्ट खबर ये है कि ये कराची में दिखाई जा रही है, इस्लामाबाद में दिखाई जा रही है, हम इस पर बात करेंगे। और पंजाब में जो मसला है उस पर भी बात करेंगे। एंड देन वी विल टच अपॉन द विनर्स एंड लूजर्स। उसके साथ साथ ट्विटर पे इलॉन मस्क और उसकी कोशिशें, क्रिप्टो के अंदर, अदर स्मॉलर टॉपिक्स उस पे we'll touch upon. But Amber, let's start this discussion with the big story of the week, and probably the big story for next week as well, which is who becomes the most powerful man in Pakistan, i.e. the Chief of Army Staff. What's the latest? What are you hearing? And who is in the running or the top contender for this job? उज़ैर, आपने बहुत मुश्किल सवाल पूछा है टॉप कंटेंडर का, क्योंकि मेरे ख्याल में कि ना मैं फिलहाल आपको I can't tell you exactly who will be the army chief, but I guess we could speak about a few of the top contenders, and I think that's perfectly valid. यहाँ तक तो हम बात कर सकते हैं। मेरे ख्याल में कि इस वक्त जो सबसे ताज़ी जो डेवलपमेंट है, जो पेशरफ्त हुई है, वो बहुत अहम है। वो ये थी कि तवक्को की जा रही थी कि आर्मी चीफ की समरी, जो उस उम्मीदवारों की फहरिस्त होती है, जिस पर जो सेक्रेटरी डिफेंस की तरफ से या मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो है वो उसकी तरफ से मूव होती है, जिसमें उम्मीदवार भेजे जाते हैं वजीर आजम को, फिर मुशावरत होती है, उसमें उनका तफसील के साथ उनका जो करियर होता है, बैकग्राउंड होता है, उस पर गौर व फिक्र होती है, और फिर दो नाम वापस भेज दिए जाते हैं। एक CGCSC होती है और एक ज़ाहिर आर्मी चीफ का नाम होता है। सो दो उम्मीदवार होते हैं जो फाइनली सिलेक्ट होते हैं। इस पे जो समरी मूव होनी थी वो इस वीकेंड पे मूव होनी थी, यानी कि हम अब ज़ाहिर हफ्ते के रोज हम बात कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद की जा रही थी कि ये 17-18 यही वक्त होगा कि समरी मूव भी हो जाएगी। मैं इस वक्त, क्योंकि इस्लामाबाद रावलपिंडी में तो नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारी जो बातचीत इस वक्त चल रही है वो ये है कि कुछ नामों पे बात अड़ गई है और कुछ इंटरेस्टिंग मीटिंग्स और डेवलपमेंट्स भी हुई थी। एक ये था कि इसाक डार साहब, जिन पे हम जाहिर है अगले सेगमेंट में भी बात करेंगे, उन्होंने मुलाकात की सदर आरिफ अलवी से, और कुछ मईशत की सूरत हाल पर उनको ये बताया जा रहा है कि उनको कुछ आगाह किया गया, ये बताने के लिए कि अगर आप खदशा क्योंकि ये पैदा हो रहा था कि इसाक के सदर आरिफ अलवी समरी को, क्योंकि उनका साइन ऑफ चाहिए होता है फाइनल, वो रोक देंगे। ये एक स्ट्रैटेजी इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनाएगी ताकि कुछ रोड़े अटकाएं जो फाइनल। और ये शुरू में उन्होंने किया था, जब हुकूमत तब्दील हुई थी, 2 या 3 नोटिफिकेशंस रोकी थी उन्होंने। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। सो एक स्ट्रैटेजी थी। फिर आपको याद होगा कि एक खत भी इमरान खान साहब ने लिखा था आरिफ अलवी साहब को, तो उस पर भी क्योंकि शक व शुबहात पैदा हो रहे थे कि शायद दोबारा से हो। ये बताया जा रहा है कुछ जराए की तरफ से, कुछ यूट्यूबर्स की तरफ से, कि आरिफ अलवी साहब ने कह दिया है कि इस वक्त मैं कोई रुकावट नहीं पैदा करूंगा। वैसे भी वजीर आजम का इस्तेहकाक है, और ये भी उन्होंने कहा था कि मेरे पास तो कोई ऐसा, I don't have the right to do it as well. I don't have the constitutional sort of role. That is not my role. पहले मैं कर चुका हूँ, लेकिन अब मैं नहीं कर रहा। ये रिपोर्टेड है फिलहाल। दिलचस्प बात यह है क्योंकि इस वक्त वजीर आजम शहबाज शरीफ को कोविड है, तो वो इस वक्त सीन से भी बाहर है, और ये काम इसाक डार साहब के सुपुर्द खाक किया गया है। और ये भी मेरे ख्याल में बहुत बताना जरूरी है कि इसाक डार साहब नवाज शरीफ के साथ बहुत अरसा गुजारा भी लंदन में जब एग्जाइल में थे, और बहुत करीब भी।
So I think that is also an interesting connection that we need to make there. I think اس پہ میں اگر آپ کو روکوں before you move on, یہ بڑی interesting بات ہے اس پہ تھوڑی سی let's dive a bit deeper. My perspective on this is کہ بیسکلی یہ کام آؤٹ سورس کر دیا گیا ہے دا نواز شریف ونگ آف دا پارٹی کو, کہ ایون دو شہباز شریف وزیر اعظم ہیں, ان کو کہا گیا ہے کہ بھائی جان آپ ذرا آپ بیمار ہیں, ٹھیک ہے, اب وہ اصل میں بیمار ہیں نہیں ہیں, آئسولیشن میں, وہ فون بھی نہیں اٹھا سکتے میرے خیال میں. I will say one thing, کیونکہ لوگ کافی زیادہ یہ سوال پوچھ رہے تھے کہ واقعی ان کو کووڈ ہے یا نہیں ہے. اتنا میں کہہ سکتی ہوں کہ وہ ہر ویکینڈ پہ لاہور ضرور جاتے ہیں, اس بار نہیں گئے. So maybe there's truth in it. جی, اور وہ کووڈ اتنا سیریس ہے کہ وہ فون پہ بھی بات نہیں کر سکتے اور کنسلٹیشنز بھی نہیں کر سکتے. تو اسحاق ڈار کو, جو کہ آلریڈی ہم سب کو معلوم ہے کہ ہی ریپرزینٹس نواز شریف ان اسلام آباد ناؤ, تو ان کو آؤٹ سورس کر دیا گیا ہے. اور یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ جو ہے پاکستان کی سیاست, جو ہم بات کرتے رہتے ہیں کہ نازک موڑ پہ گھوم کے واپس آ جاتے ہیں, یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ اسحاق ڈار ہیڈ اے فالنگ آؤٹ ود دا ملٹری when he was finance minister, اور اس کے بعد ان کو جو ٹارگیٹ کیا گیا وہ پھر ملک سے باہر گئے. دس واز مینلی ڈریون بائی ہز فالنگ آؤٹ آف دا ریلیشنشپ ود دا ملٹری, اینڈ ناؤ ہی از بیک in an ironic twist. وجہ تو عزیر ان کے ساتھ جو ملٹری کے ساتھ ان کی فالنگ آؤٹ ہوئی تھی, وجہ بھی تو میرے خیال میں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, and that was about the budget. It was about the budget, it was about allocations. تو اب ڈار صاحب واپس آئے ہیں, اور ڈار صاحب جو ہیں وہ ایک سینٹرل کردار ادا کر رہے ہیں اگلے آرمی چیف میں. بٹ آئی تھنک یہ پوائنٹ ضروری ہے ناظرین کے لیے سمجھنے کے لیے کہ he had a falling out, now he's back, he's representing the House of Sharif on the Nawaz wing, and the Prime Minister has, he's sick, but he's taken a back seat for the time being on all that is happening related to this. Absolutely. And یہ بھی جو کافی زیادہ میں کہوں گی کہ خبریں پھیلی ہوئی تھی کہ شاید معاملہ کچھ اٹک بھی گیا ہے. سو ایک طرف اگر رکاوٹیں جو پیدا ہو رہی تھی ممکنہ طور پر ان کو روکنے کی کوشش کی گئی, اسحاق ڈار صاحب کر رہے تھے, لیکن دوسری طرف یہ بھی بتایا جا رہا تھا کہ جو سمری موو ہونی تھی, جو ہو جانی چاہیے تھی, وہ اس میں کچھ تاخیر ہے. اور یہ خواجہ آصف نے تصدیق بھی کی تھی کہ اب کچھ اگلے دنوں میں, اس ہفتے میں, آنے والے ہفتے میں ہوگی. But and I think there's an excellent vlog جو کامران یوسف, جو سیکورٹی ڈیفینس کے رپورٹر بھی ہیں, ایکسپریس ٹریبیون کے لیے لکھتے بھی ہیں اور شو بھی کرتے ہیں ایکسپریس ٹیلی ویژن پہ, ان کا بڑا انٹرسٹنگ ولاگ تھا. اور انہوں نے کچھ بات چیت کی تھی پاکستان مسلم لیگ نواز کے ادوار میں, جو طریقہ, جو ٹائمنگ, جو پروسیس ہوتا تھا on moving the summary of the army chief and how long it usually takes. ان کا کہنا تھا کہ اس سے پہلے 2013 ہو یا 2013 کی بات کر رہے تھے, اور جب 2016 جب جنرل باجوہ کی تعیناتی ہوئی تھی, تو یوزلی سمری 40 دن پہلے موو ہو جاتی تھی, پھر بہت سی مشاورت ہوتی تھی, پھر نام چنا جاتا تھا. سو یو کین امیجن دیٹ دس ڈیلے از انیوژول, یہ غیر معمولی ضرور ہے. اور عزیر, آپ کو بھی یاد ہوگا, مجھے بھی یاد ہوگا, ہم تمام جو سیاست پاکستان کی دیکھتے ہیں اور اس میں دلچسپی رکھتے ہیں, سب کا یہی کہنا تھا کہ سیاست کا محور اس سال اسی کے گھومے گا کہ کون بنے گا آرمی چیف. نومبر کی تعیناتی از دا موسٹ امپورٹنٹ, اور چاہے عمران خان صاحب اور ان کی لانگ مارچ ہو, چاہے موجودہ کولیشن گورنمنٹ ہو, ان کے وہ کیوں اس وقت انہوں نے موو کیا تھا, اور ان کا کیا کردار ادا ہونا تھا جب یہ نومبر کی تعیناتی ہونی تھی. why they wanted to be in government, why Imran Khan was perhaps, as many people would say, favoring a certain lieutenant general from the armed forces, and why that was important to him. These are all questions that we talk about, but they really come center and front and to the fore at the moment, just as November ends and General Javed Bajwa has confirmed that he's retiring. اینڈ آئی تھنک امبر اس کے اندر دو انٹرسٹنگ چیزیں جو مجھے, کامران یوسف کے بلاگ کا آپ نے بات کیا, اس کی آخری منٹ میں انہوں نے جو ہے سب سے پتے کی بات کی کہ یہ جو جنرل صاحب ہیں جن کی آپ نے نام نہیں لیا, میں لے لیتا ہوں, جنرل فیض حمید, انہوں نے لابنگ کی بھی کوشش کی ہے نون لیگ کے ساتھ کہ انہیں آرمی چیف بنایا جائے, کہ ان کی فیملی چکوال سے ہے, ہسٹوریکلی پی ایم ایل این کی سپورٹر تھی, تو وہ اب کوشش انہوں نے کی, آئی ڈونٹ تھنک کہ کامیاب ہوگی. لیکن اس پہ نجم سیٹھی نے بھی کہا, اعزاز سید کا جو عمر چیمہ کے ساتھ یوٹیوب چینل ہے اس پہ بھی بات ہوئی کہ لابنگ ہو رہی ہے, ڈفرینٹ پیپل آر ٹرائنگ ٹو یوز ڈفرینٹ چینلز
to lobby the Prime Minister But or the that's not ruling party. unusual. ये lobbying और जो अपने पब्लिक में अपनी जो इमेज है वो जब भी नए आर्मी चीफ की तैनाती होती है या एक्सटेंशन का शायद आखिर होता है, but that always happens. There are campaigns, some negative against incoming army chiefs, or फिर army chiefs that then get to the bottom of who did these campaigns, also actually then take strict action against those military officers Yes. who are in the running as well. So that happens post appointment. In fact, ये documented बात है, अगर लोग पढ़ना चाहें, it's a must read book by शुजा नवाज, The Battle for Pakistan. उसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ है कि जो कमर जावेद बाजवा साहब की अपॉइंटमेंट थी, उनकी जो कैंपेन चलाई गई, वो एंड में मालूम हुआ कि उनके और ये दूसरे लोगों ने भी रिपोर्ट किया कि जनरल रिजवान अख्तर was running that campaign against him at that time, and he was shunted out. He was punished for it. So again, the point for raising this, Amber, was कि फौज एक तरफ कह रही है हम एपॉलिटिकल हैं, दूसरी तरफ जो फौजी कंपेटिटर्स हैं, जो राइवल्स हैं इंटरनली इस जॉब के लिए, वो लॉबिंग भी कर रहे हैं. तो ये एक अजीब सा तजाद है, एटलीस्ट इन माय पर्सपेक्टिव, कि ऑन द वन हैंड यू आर सेइंग कि वी वांट टू विदड्रॉ एंड बी एपॉलिटिकल एंड बी लिमिटेड टू आवर कॉन्स्टिट्यूशनल रोल, लेकिन the men who are supposed to take over this job in the next couple of weeks are actually, some of them, not all of them, are lobbying for that position on the political side, which in and of itself, at least to me, is a political act. तो ये जो हमने इस पे पिछले हफ्ते भी बात की थी कि कॉल और फेल में तजाद है, वो अभी भी नजर आ रहा है कि जी आप ये कोशिश करें. इनफैक्ट इस हफ्ते या लास्ट वीकेंड की खबर ऑन अनदर नोट थी कि फौज कोशिश कर रही है एमक्यूएम को जोड़ने की कराची के अंदर, और इस पे कोई डिनायल नहीं आया. हमने इसके बेस पे डिस्कशन ज्यादा नहीं हुई either on the mainstream or anywhere else that I've seen, but I think that's also another indication कि शायद ये जो apolitical की बात हो रही है, hasn't happened yet. और वो जो घूम फिर के लौट के बुद्धू घर को आए, तो डार साहब इस्लामाबाद में वापस आ चुके हैं और कोशिश हो रही है कि एमक्यूएम से दोस्ती की जाए. बट अंबर, ऑन द थिंग एज वेल कि पॉलिटिक्स इज ड्राइविंग एवरीथिंग एल्स, एंड दिस अपॉइंटमेंट इन पर्टिकुलरली इज ड्राइविंग एवरीथिंग एल्स. एक और खबर आई थी इस हफ्ते, एंड आई वुड लव योर पर्सपेक्टिव ऑन दिस, कि आर्मी एक्ट में अमेंडमेंट की बात हो रही थी और ख्वाजा आसिफ साहब ने इसको डिनाई दी किया. उन्होंने कहा ये मेजर चेंजेस नहीं है और ये कोर्ट ने हमें कहा था, और कोर्ट की बात अचानक से इस हफ्ते याद आ गई कि उस पर फॉलो थ्रू करना है. व्हाट्स गोइंग ऑन ओवर देयर, व्हाट्स योर रीड कि क्यों ये जो कोशिश की जा रही है अपॉइंटमेंट के रूल्स चेंज करने की? Okay, so that's an interesting one because ये खबर ये डॉन पे ही छपी थी, और ये डॉन के एक शो है, आदर शाहजेब उनके रिपोर्टर हैं, Rizwan ul Haq, I believe. I may be getting his name wrong, but he's the one who broke that story both on television and then in the newspaper as well. और उसमें जो शक ये पैदा हो रहा था, क्योंकि जाहिर है इस वक्त जो हम मुख्तलिफ जो उम्मीदवार है वो देख रहे हैं कि उनकी रिटायरमेंट कब है, और उनको क्या एक्सटेंशन रिटेंशन की बात है. These were additions in the law. And there's a couple of questions on that. Obviously, some people thought that this would favor General Javed Bajwa in terms of an extension, or maybe a kind of, sort of a carrot the government was offering. But there were other people who were looking at the retirement of Lieutenant General Asim Munir, who is seen to be sort of straightforward, quite officer, जो शायद नवाज कैंप को उनका ज़्यादा लीनिंग है कि उन्हीं को अपॉइंट किया जाए, और लेकिन he was also retiring. I don't have the exact dates on me at the moment. But I know and really quickly on General Munir, he perhaps had the shortest stint as a DGISI. Famously fell out with Imran Khan, और उसके बाद फैज हमीद लगाए गए. तो ये भी एक थिंकिंग है कि जी वो उनकी पसंदी जो है वो नून लीग की तरफ है और पीटीआई से उनका झगड़ा हुआ है, तो ये जरा अच्छे अपॉइंटमेंट होंगे. Yeah, but I mean, the thinking is that because he's kind of straightforward, that may get him in, that Imran Khan didn't like him. It's actually because Imran Khan didn't like him and that he perhaps challenged or questioned a few things that Imran Khan wanted done. तो इसीलिए उनको तैनात करना चाहिए. That's the thinking. But of course, हमें भी पता है, आपको भी पता है कि जो भी आर्मी चीफ बनता है वो फिर जाहिर है इदारे के साथ ज्यादा वो उनकी लॉयल्टी भी होती है. I think हर आर्मी चीफ जब भी कोई तैनाती होती है उसके बाद हमें बहुत सारी तारीफी अखबारात में हमें आर्टिकल भी पढ़ने को मिलते हैं जिसमें बताया जाता है कि वो हाई प्रोफेशनल सोल्जर. दैट्स अ रियल क्लीशे दैट्स यूज्ड इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स. सोल्जर
soldier, professional, and that usually implies that, he's going to stick to security matters. And again, I think that's part of the sort of campaign that you see running in favor of army chief. So I would say it's a risk. Asim Munir is said to be is going to be the most senior most, and that's another thing that you keep hearing is कि senior most को ही तैनात किया जाए, और ये बेहतर है और यही तरीकाकार आइंदा भी होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे मुशर्रफ को किया था, which was about under number 5, 6, 7, और ज़ियाउल हक को किया था. I believe even General Qamar Javed Bajwa wasn't actually on the senior most. He was fourth, or Rahil Sharif was third. Exactly. So it kind of fits, but it also could backfire very badly, to be honest. Like I said, I think every army chief is loyal to the institution and not to the political party that makes the call. After all, it is the most powerful position in the world, which is why you see so much lobbying for it. I also want to point out a couple of interesting sort of coincidences, because इस वक्त जो इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च भी चल रहा है, और उसकी जो तारीख जो रावलपिंडी पहुंचने की, and रावलपिंडी is key here because Imran Khan's reiterated this, is he's passed through चकवाल, और वहां चकवाल में जो रिसेप्शन हुई थी उनके काफले की, we must remember that Imran Khan is injured after the assassination attempt, and it's being led by other leaders. जो लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद हैं, उनके भाई चकवाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, and also welcomed received the long march as well in Chakpal, which just happened yesterday. So that's an interesting point. There's also another interesting point that I would say Mansoor Ali Khan made in his YouTube channel, and ये भी जो farewell tour था General Qamar Javed Bajwa का, उसमें जो तमाम उम्मीदवार आपको इस वक्त नजर आ रहे हैं, साहिर शमशाद हो गए, I believe इसमें let me just have a quick go through all the names as well, but Sahir Shamshad ho gaye, as well as others who are commanding a corps. Peshawar ke jo corps commander, he's also obviously in the running, although not on the senior most list or really talked about much. Unhone receive kiya tha, unko welcome kiya tha outgoing army chief ko. General Faiz jo Bahawalpur ke corps commander hain, unka naam us press release में शामिल नहीं था, and there were a lot of pictures that people were talking about जिसमें they're both sitting together and didn't look too happy, to be honest. Body language experts, body language expert बन गई हैं आप. Yeah, well, I mean, I will say I think that's more telling. His name was missing from the people who received General Bajwa, rather than talking about body language and what we read from it. But I think that is also an interesting point that Mansoor raised on his YouTube channel. Yeah, and then again, there's a lot of मेरे लिए looking at it structurally and institutionally एक अजीब सी बात है कि 75 साल की इंडिपेंडेंस के बावजूद आज तक जो है तरीका आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का क्लियर नहीं है. इनफैक्ट जब आप ये बात कर रही थी सीनियर मोस्ट जनरल का, तो मेरी किसी और से बात हो रही थी इस पे, तो उन्होंने एक और इंटरप्रिटेशन दी. उन्होंने कहा देखें सीनियर मोस्ट तो फिर द टॉप पोस्ट इज द चेयरमैन जॉइंट चीफ्स, तो सीनियर मोस्ट तो उधर जाना चाहिए ना. तो अगर आप आसिम मुनीर सीनियर मोस्ट हैं तो उनका तकर्रुरी मेन पोजीशन पे होनी चाहिए, लेकिन बिकॉज द चेयरमैन जॉइंट चीफ्स इज मोस्टली अ सेरेमोनियल पोस्ट, इट डजंट हैव द पावर दैट द चीफ्स ऑफिस हैज. तो अब वो जो है जो ड्रॉ है वो चीफ की COAS की पोजीशन का है. तो अगेन देयर इज अ लॉट at stake, and again we will see where this happens. खान साहब कह रहे हैं कि 26 नवंबर को वो रावलपिंडी में पहुंचेंगे, which means basically on the eve of a change of guard at the GHQ in Rawalpindi. उससे क्या होता है अपॉइंटमेंट की वजह से, वो किसको कितना टारगेट करते हैं, does he go for the reset clock or not, which there is again within the PTI there are two camps, right, and we should talk about this as well. कि एक कैंप है जो कहता है कि आप जो थोड़ा मुफाहमाती जो है स्ट्रेटजी अपनाएं, और एक कहता है कि नहीं आपने फुल ऑन कॉन्फ्रंटेशन की तरफ जाना है क्योंकि आपने और कोई तरीका नहीं है. तो ये भी एक डिबेट चलेगा पार्टी के अंदर, डिपेंडिंग अगेन ऑन हु द नेक्स्ट चीफ इज. एंड आई विल से कि इस डिबेट में और खास तौर पर जो मुफाहमती जो कैंप है उसमें जो एक वोकल लीड इस वक्त बने हुए हैं वो फैज अबाउट है. वो तो पार्टी में ही नहीं है ना, अब तो पार्टी में नहीं है, but I mean he's the one who's well, that's why do you think nobody else is that vocal about it? Yeah, and we know he still has friends in the party who he keeps saying कि उन्होंने कोशिश की समझाने की, और फिर वो सांपों की भी बात करते हैं. Friends in very high places. Correct.
करेक्ट. तो ये एक अजीब सा एक तरह से फॉर दोज ऑफ अस हु लव टू रीड हिस्ट्री कि ये जो है वो बगदाद के अंदर जो है कोई चेंज ऑफ गार्ड हो रहा है, खलीफा बदल रहे हैं, तो उसमें जो है खलीफा तो नहीं बदल रहे, कमांडर बदल रहे हैं, और सबको पता है कमांडर फिर खलीफा पिक करता है. या आप अगर ऑटोमन एम्पायर में चले जाएं तो जैनिसरीज जो हैं वो अपना कमांडर पिक करने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर वो कमांडर जो है वो खलीफा को इन्फ्लुएंस करेगा. तो इट्स अ वेरी बिजेंटीन वे ऑफ गवर्नेंस के कैपिटल इस्लामाबाद है, बट ऑल आइज आर ऑन रावलपिंडी. हमारी भी नज़रें पिंडी की तरफ ही हैं और देखते हैं कि किसकी सिलेक्शन, किसकी नॉमिनेशन होती है. लेकिन आखिरी पॉइंट इस पे अंबर, आई डोंट नो इफ यू हर्ड एनी मोर डिटेल्स ऑन दिस, देयर वाज एन एडिशन पॉइंट. हमने डार साहब की बात की कि वो आउटसोर्स कर दिया गया है नवाज विंग ऑफ द पार्टी को. ये भी कहा जा रहा था कि जब वो नाम की फहरिस्त आएगी तो मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली जरदारी से भी मुशावरत होगी, क्योंकि वो एलाइज हैं कोalition के, और कंसेंसस कैंडिडेट पिक होगा. व्हाट्स गोइंग ऑन ओवर देयर, बिकॉज अगेन structurally, legally speaking, this is the prime minister's choice. It doesn't say that the prime minister cannot consult anybody, but it is interesting that that is become the focus now, because usually hota tha ki wazir azam sahab is pe faisla karenge. Well, I mean, it makes perfectly natural sense to me. इसलिए क्योंकि इस वक्त जो हुकूमत ली गई है और फिर यहाँ तक खींच दिया, हुकूमत को यहाँ तक पहुंचा दिया गया है इत्तेहादियों के साथ मिलकर, है ना. अभी आसिफ अली जरदारी साहब ने का एक स्टेटमेंट भी सामने आया था कि जो 3 स्टार जनरल होते हैं वो सब बराबर होते हैं. ये कहने की कोशिश की गई थी, शायद जो ये बात इस वक्त चल रही है कि अगर नवाज शरीफ का मूड या नवाज शरीफ कैंप का मूड इस वक्त ज्यादा है कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को ही तैनात किया जाए, तो शायद ये इशारा भी आपको मिल सकता है एटलीस्ट पब्लिकली कि और भी लोग हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी करते हैं, जरूरी नहीं है कि उन्हीं को करें. इतना शायद वाज़ेह तौर पर है क्योंकि एक जो टीम थी इमरान खान की और लेफ्टिनेंट जनरल फैज की, लेट्स be very clear. This was a team that managed politics together, and opposition leaders को किस तरह से निमटना है से लेकर कानून साजी तक, ये 2 लोग थे जो एक पार्टनरशिप उनकी थी. So you could say, given that Lieutenant General Faiz is lower down in the seniority list, which makes it easier, obviously, कि उनको शायद ना किया जाए. लेकिन यहाँ इनकी as coalition partners, I think there's no harm, and I think it's important for them to have their take on it as well. This is a weak government. Let's not forget this. क्योंकि पार्लियामेंट की जाहिर है एक अहमियत तो नहीं रही, लेकिन फिर भी वजीर आजम पार्लिमानी वोट्स के जरिए ही उनका इंतखाब होता है. शहबाज शरीफ साहब has actually sort of the lowest, slimmest majority in probably Pakistan's history, even less than Imran Khan. He's the weakest prime minister since Jamali became prime minister under the Musharraf dictatorship. उनका 1 वोट का मार्जिन था और शहबाज शरीफ साहब का 2 था और खान साहब का 4 का वोट का मार्जिन था. Exactly. So he is incredibly dependent on the army. He's incredibly dependent on his coalition partners. So yes, I think it makes perfect sense for him to consult with them. चलें, इस पे देखते रहेंगे आगे आगे होता है क्या. कौन जो है कौन बनेगा करोड़पति टाइप सीन है. फिगरेटिवली लिटरली भी इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट है, उस पर अगर हम जाएंगे तो शायद अमर, मैं तो डीसी में बैठा हूँ हम जो है आप पाकिस्तान में, तो लेट्स अवॉइड दैट. लेट्स मूव ऑन. स्पीकिंग ऑफ मनी, what's the mood in the financial capital of Pakistan in terms of the economy? पूरा हफ्ता बात चली default risk, खान साहब भी बात कर रहे हैं default risk की, और आज on the weekend Dar Saab did give an address कि हम नहीं करने वाले. What's the latest over there? So I think the mood is pretty grim. The mood is कि इस वक्त आपकी जो सियासी अदम इस्तेहकाम एक तरफ है जिसकी वजह से आप प्लान ही नहीं कर पाते, दूसरी तरफ से आपका IMF का, I will sort of look to you for insights on the economy. I'll just tell you what the mood is. Things are seem pretty grim. अभी भी जो default risk पाकिस्तान की उसमें इजाफा किया गया था, again जैसे हमने देखा था about 4-5 months ago कि हम दोबारा से कुछ श्रीलंका के हालात हैं वो तो उसकी तरफ नहीं जा रहे. दूसरी तरफ जो ये भी बातचीत चल रही है कि IMF के साथ जो बातचीत है, I believe Dar Saab did have an online meeting as well, but really the question is obviously revenue collection under these circumstances, given the situation, the floods, has been difficult, as well as the fact that there's no guarantees कि जो review होगा ये किस तरफ जाएगा. IMF, will it
understand Pakistan's difficult position in terms of collecting, is increasing revenue or collecting enough revenue in terms of subsidies, all of those things. So the mood is pretty grim. I think business has been suffering. Business confidence, according to a Gallup survey, is probably at its lowest for a very long time. And that's sort of the mood right now. But I want to ask you, default होने लगे, दिवालिया होने लगे या नहीं? ये आप मुझे बता दें। देखिए, मैंने कुछ अर्ली समर में मैंने लिखा था कि इमिनेंट डिफॉल्ट है, एंड दिस वाज बिफोर द आईएमएफ प्रोग्राम वाज रिज्यूम्ड, एंड अगेन वी नीड टू बी वेरी केयरफुल इन टर्म्स ऑफ आवर एनालिसिस एंड असेसमेंट. क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स जो कि एक रिस्क इंस्ट्रूमेंट होता है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक एन इंश्योरेंस पॉलिसी. उसकी प्राइस बढ़ गई है, which some people would say कि it means that the market is pricing in a higher risk of default, which is a totally fair position to take. However, पाकिस्तान के जो क्रेडिट डिफॉल्ट रिस्क हैं, इट्स नॉट एज इफ दिस इज द क्रेडिट डिफॉल्ट रिस्क मार्केट ऑफ द ब्रिटिश bonds or the American bonds or the Japanese bonds or even for that matter the Indian bonds. The market is very illiquid, is my understanding of it, which means that it's not an absolutely good or perfect indicator of default risk. You have to look at other elements of this as well, which then takes us to the next layer of analysis. वो ये है कि अपकमिंग दिसंबर में $1 अरब की सुकूक की बॉन्ड की पेमेंट होनी है. That is due. Right. Now that bond is trading at near par value, which means that जो market expectation है वो ये है कि अगर आप उसको पार पे ट्रेड कर रहे हैं कि आपको मिल जाएंगे वो पूरे पैसे जब उसकी रीपेमेंट का टाइम आएगा, जो कि डार साहब भी कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे हैं ये पे करने के लिए. I think even the state bank governor also said that we have enough money to pay back that. Correct. So we have, Pakistan has state bank official reserves तकरीबन $8 अरब के हैं. आपने $1 अरब ये देने हैं तो clearly you have enough money to make this payment. और उसके बाद जो next bond payment होनी है वो अप्रैल 2024 में होनी है, तो आपके पास एक breathing room है. ऑन टॉप ऑफ इट आप आईएमएफ प्रोग्राम के अंदर हैं, तो आईएमएफ बिल्कुल ये नहीं चाहेगा कि आप डिफॉल्ट करें व्हाइल बीइंग इन एन आईएमएफ प्रोग्राम, क्योंकि वो उनके लिए भी एक रेपुटेशनल और क्रेडिबिलिटी रिस्क है, राइट? तो ये सिचुएशन नियर टर्म है कि ऐसा. Isn't that good news? That is good news. So नियर टर्म में गुड न्यूज है, लेकिन जो क्रिटिकल कोर इशू है मईशत के अंदर, वो नॉट ओनली इज परसिस्टिंग, इट इज ग्रोइंग एंड बिकमिंग मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स, बिकॉज डार साहब की अप्रोच के उन्होंने 10 दिन पहले कहा $13 अरब का इंतजाम हो गया जब वो चीन में गए थे, वो अभी तक नहीं आए, और वो नहीं आने क्योंकि वो भी इंतजार कर रहे हैं जैसे पहले इंतजार किया था सऊदीज और चाइनीज ने कि आप आईएमएफ से अपने मामला जो हैं वो तय कर लें. तो अब ये जो ऑनगोइंग रिव्यू है जो डिले हो चुका है, उस पर आते हैं. That is because जो disagreement है, और ये जब डार साहब यहाँ आए थे, and I had off record a part of a group that had an off record discussion with them, that my takeaway in that discussion was that हुकूमत कोशिश कर रही है कि वो फ्लड्स के जो इम्पैक्ट है उसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाए IMF और वर्ल्ड बैंक को. Why would they want to do that? मेरा IMF is not buying. It's not. So yeah, so they want, हुकूमत कोशिश कर रही है कि बढ़ा चढ़ा के बताए ताकि IMF से आसानी हो. IMF कह रही है कि आप ज्यादा बढ़ा चढ़ा के कह रहे हैं तो जरा हल्का हाथ रखें. तो ये अब एक डिसएग्रीमेंट बन गई, राइट? और IMF का पर्सपेक्टिव, आई एम मोर ऑन देयर साइड इन द सेंस दैट आपका जो फ्लड का इम्पैक्ट है, 33 million people affected, over $20 billion in losses in reconstruction, etc., however you want to measure it, ये जो इम्पैक्ट है ये आपकी रूरल इकोनॉमी पे है. That does not mean कि आप जो है tax reform on retailers in urban Pakistan या tax reform on real estate in urban Pakistan या dealing with the circular debt which is primarily an urban Pakistan issue, आप वो नहीं कर सकते. Of course you can, right? It's not linked to the rural economy in the direct way that you would argue a flood is. तो IMF की पोजीशन है कि जी आपने जो कमिटमेंट्स की हैं आप उनको फॉलो करें, और उसके अंदर अगर आपने टू द वल्नरेबल सेगमेंट्स ऑफ योर सोसाइटी जो इम्पैक्ट हुए हैं फ्लड से, उनको आपने रिलीफ पहुंचाना है, आपने रिकंस्ट्रक्शन के लिए पैसे इकट्ठा करके डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो वो आप करें, हम नहीं रोक रहे. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको फ्री पास मिल जाए हर चीज बाकी चीजों के ऊपर. और हुकूमत कोशिश कर रही है उसको फ्री पास मिले क्योंकि इलेक्शन का सीजन है. अब आप कैसे टैक्स लगा के इलेक्शन में जाएंगे, राइट? तो ये सिचुएशन है, ये डिबेट है और ये डिस्प्यूट चल रहा है.
point out, I also want to point out, Uzair, कि इस वक्त जो कुछ खबरें आई हैं पिछले हफ्ते, which actually support the IMF's contention, is how are you coming up with this figure? So apparently, according to Shahbaz Rana's story in the Tribune, Pakistan had presented something like $1.1 billion of potential reconstruction and rehabilitation money that's needed for flood relief, right? For post-floods recovery. And there was another story, sorry, मुझे खांसी आ रही थी, but there's another story जो आई थी, जो इस वक्त एक स्टैंडिंग कमेटी है कौमी असेंबली की, एनडीए में से पूछा गया था कि आपके पर डिस्ट्रिक्ट आप बता सकते हैं कि कितने अफराद मुतासिर हुए हैं. And the NDMA did not have that data. So how have we made this assessment, and who's responsible for such a poor show, for overestimating or overselling? I don't know how you would describe this. How many people are affected? How much money we need for rehabilitation and recovery? No, fully agree. And I mean, Amar Khan और मैंने जब अपनी assessment करना शुरू की थी, और we then stopped doing it because it reached a decent level of analysis. उसमें हम यही बात करते थे कि देखें, हम जब we're doing open source analysis, right? So the government data that's being put out, we're using that. I'll give you an example on this, on how terrible the data is. बलूचिस्तान में जब सैलाब की जो सिट्रैप आने लगी, उसके 2 हफ्ते के अंदर एस्टिमेट था कि 500,000 लाइफ स्टॉक हैव बीन लॉस्ट. ठीक है, अब 500,000 आपने बलूचिस्तान जैसे सूबे में 2 हफ्ते में गिनती कैसे की है? उधर लिखा हुआ है एस्ट्रिस लगा के कि ये एस्टिमेट है, और ये एस्टिमेट अपडेट ही नहीं हुआ था काफी हफ्तों तक. अब हुआ है नहीं, आई डोंट नो, आई हैवंट लुक्ड एट इट इन अ व्हाइल. बट आई विल गिव यू अनदर क्रेजी एग्जांपल रिलेटेड टू दिस. ये जो लाइफ स्टॉक का फिगर है, ऑब्वियसली इट हैज टू बी बेस्ड ऑन सम सॉर्ट ऑफ मेथोडोलॉजी, राइट? मेथोडोलॉजी का कोर कंपोनेंट होता है लाइफ स्टॉक सर्वे किसी भी मुल्क के अंदर. फॉर दोज ऑफ यू हु वॉच द शो येलोस्टोन, फॉर एग्जांपल, ranchers in America even count the number of cows they have in Montana, right? So you have to have that count. पाकिस्तान का लास्ट लाइफ स्टॉक सर्वे वाज डन इन 2006-7. 15 साल से हमने गिनती नहीं की है इस मुल्क में जानवर कितने हैं. तो आपने एस्टिमेट कैसे कर लिया लाइफ स्टॉक का? नाउ दैट इज डायरेक्टली लिंक टू रिकंस्ट्रक्शन मनी, बिकॉज अगर एक किसान है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वो कहता है मेरी 10,000 जो है इस इलाके में 10,000 गाय भैंसे बकरे जो हैं वो मर गए, आपने गिनती नहीं की, तो आप पैसा कैसे दे सकते हैं, राइट? तो सम सर्वे हैज टू बी डन. ऑन टॉप ऑफ इट, फॉर एग्जाम्पल, इज द इशू के आप कह रहे हैं दुनिया को कि हमें पैसे चाहिए रिलीफ और रिकंस्ट्रक्शन के लिए. सिंध के अंदर अब तक सिंध हुकूमत ने खुद 10 हॉस्पिटल टेंट्स लगवाए हैं बाय देयर ओन डेटा. ऑन दिस इज अवेलेबल ऑन द PDMA सिंध वेबसाइट. तो 10 से ज्यादा की तो कैपेसिटी है यार सिंध जैसे सूबे के अंदर, जहां 7 मिलियन पीपल हैव बीन अफेक्टेड एज फार एज आई रिमेंबर लास्ट काउंट. तो देर इज दैट फटीग एज वेल कि आप अपना काम पूरा करें. अगर सिंध कहे कि जी हमने 50 लगा दिए, नाउ वी आर टैप्ड आउट एंड वी नीड हेल्प एंड वी नीड मोर फिस्कल स्पेस, it kind of makes sense. But 10, come on, give me a break. So I think that's where the debate is. What's really key to understanding here is in terms of who's responsible for collecting this data, as well as I think it merits a comparison with 2010. So 2010 floods there was also independent assessments that were made, because there was actually a UN system and their local partner organizations in place. And I remember that we used to get regular updates from NDMA as well, actually, कि ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है इस वक्त क्या है, कितने लोग मुतासिर हुए हैं, कितने स्कूल, कितने लोग बेघर हुए हैं. There has been absolute, incompetence in terms of telling people what the current situation. अब मुझे ये भी नहीं पता कि कितनी जमीन अब भी ज़ेरे आब है. 1/3 एक 2 महीने पहले सितंबर तक हमें बताया जा रहा था, जब UN के सेक्रेटरी जनरल का भी दौरा था, जब एंजेलिना जोली का भी दौरा था. लेकिन what's the situation right now? I think that's a failure on the part of the provincial governments, as well as the PDM, as well as the NDMA, as well as I think the federal government. So it isn't just a disaster of a natural disaster. I think it's a disaster of disaster management as well. Fully agree, and I think that's where the issue with the IMF comes back to then, कि वो कह रहे हैं कि आप overestimate कर रहे हैं, आपका data clear नहीं है. We dispute this assessment, and again government की जो central federal government की जो approach है, it also makes sense कि उनको
रिलीफ अपने लिए चाहिए, अपने लिए फिस्कल स्पेस चाहिए ताकि वो पैसे खर्च कर सकें इलेक्शन से पहले। और IMF कह रहा है नो नो होल्ड ऑन, आपकी कमिटमेंट्स हैं एक प्रोग्राम के अंदर, यू नीड टू get done with those commitments. So I think that's where it stands. That's what's leading to the crisis. And again, Ishaq Dar ki appointment, Ishaq Dar ki approach after coming back into the finance ministry has also been disastrous. Let's be honest about that. No, but I remember there was a Twitter sort of and public scolding of Miftah Ismail because I mean, नहीं मैं इन लोगों से 25 साल से I've been dealing with this in the budget. I know what I'm talking about. When Miftah Ismail, I believe, disagreed on a couple of policy measures. मैं आंखों में आंखें डाल के जो है वो निगोशिएट करूंगा उनके साथ। जैसे तो जो ताहिर साहब का आई टू आई गाना चल रहा था, वो उन्होंने कुछ कोशिश की लेकिन वो नहीं हुई, राइट। एंड आई थिंक एंड देन ऑन टॉप ऑफ इट, डार साहब नॉट ओनली अंडरमाइंड हिज ओन पार्टीज फाइनेंस मिनिस्टर एट दैट टाइम, बट व्हेन ही केम इन, पूरा उन्होंने जो है अपनी पॉलिसी की क्रेडिबिलिटी का मेजर, जो मेजरेबल इम्पैक्ट है, वो जोड़ दिया डॉलर की रेट से। उन्होंने कहा डॉलर 200 से नीचे जाएगा, मैं अक्टूबर के एंड तक जो है ना आप देखेंगे जी, आज क्या है, नवंबर 19 हो गई, 222 पे मिल रहा है आपको, 222 पे मार्केट में मिल भी नहीं रहा, 230-35 के आसपास मिल रहा है। तो व्हेन यू हैव दिस टाइप ऑफ अप्रोच in terms of economic policy making, jahan everybody who basically looks at the data can tell you that there is no way in hell you can keep rupee strong in the way Dar Saab wanted. Obviously that leads to an issue. I'll give you an example. इस वक्त US के अंदर जो companies हैं that I sometimes interface with, जिनका पाकिस्तान में business है, they're struggling to repatriate tiny amounts of money. Pakistani companies are struggling to repatriate tiny amounts of money. They've sort of banned direct payments through apps. So startups are up and freelancers are up in arms in terms of saying कि जी हमारा तो रोजी रोटी से जुड़ी हुई है कि we have to pay something to Google, for example, for access to the Google stack or make a Zoom payment जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब अगर आपका पाकिस्तानी क्रेडिट कार्ड है और Zoom की आपकी सब्सक्रिप्शन खत्म हो रही है, you're stuck. Right, unless you know somebody abroad who will then do it, and then you'll say कि तुम जब दिसंबर में शादी सीजन में कराची आओगी तो मैं आपको पैसे दे दूंगा, right? It's that kind of transactions that's going on. So all of this is hurting. Remittances. I have to say that I actually face this issue as a part of my work as well, because we have outside contributors that we would like to pay, and it takes us months, and that's the problem, isn't it? There's also been जो बीच में letters of credit के हवाले से भी बहुत सारे लोगों को मसाइल हैं और रहे हैं, and that hinders export as well as import. Yeah, and there's a whole queue at the state bank on this. और स्टेट बैंक का रिस्पांस ये था कि जी हमने, बिकॉज ये ब्लैक मार्केट है, तो हमने एक पोर्टल बना दिया ट्रांसपेरेंसी का, आप वहाँ कंप्लेंट कर दें। वो ईमेल अकाउंट है, उस पर आप कहें, वो कह रहे हैं हम कोशिश करेंगे कि हम अनोनिमस रखें आपकी कंप्लेंट। This is not how it's done. Like, come on, this is a joke. Like, you cannot have this approach to whistleblowing about currency transactions. Like, it just doesn't work. But they did that issue. Okay, I'm going to stop you because I have a question for you. I have a question for you. We know कि इसाक डार साहब ने एतमाद का एक फ्रंट जो है वो पेश किया था, मौला जट of finance ministers, lots of experience, came in, will solve some of the immediate problems, 25 साल का तजर्बा है, IMF के साथ आंखों पे आंखें डालकर हम negotiate करेंगे. But here's a question. Apart from the sort of bluster that you saw from Ishaq Dar, apart from his emphasis on bringing the dollar value down as well, but do you think any finance minister is capable of would be able to manage what has been a big mess for years and years and years? And this, I think, is I wouldn't say that it's just one government or one finance minister who's responsible for this. No, it's a decades in the making disaster. I don't think see, Pakistan does not, I dispute the fact that Pakistan में finance ministers होते हैं. Pakistan has accounting ministers. यानी कि आपने किसी तरह books balance करनी है और 3 साल के लिए जो है ना अच्छा माहौल बना के रखना है ताकि election तक हम किसी तरह पहुंच जाएं, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, right? Which is why every successive government since the end of the dictatorship, Musharraf dictatorship, has gone to the IMF, and the cycles are getting shorter. ये एक decades in the making crisis है, और अगर किसी ने from a one data point इस crisis का impact assess करना है, तो there's 2 data points. Number one, 1990 में Pakistan's GDP per capita was higher than that of China's. So that can be one inflection point कि आप 1990 से extend करें और देखें चाइना की मईशत कहाँ और पाकिस्तान की मईशत कहाँ. दूसरा है कि since the turn of the 21st century, Pakistan has had
I think the second highest rate of inflation on average, and the lowest rate of economic growth among peer economies. Who are these peer economies? It's Morocco, it's Nigeria, it's India, Bangladesh, Vietnam, countries like that. So it's been a secular stagnation. It's been a secular crisis. It's cut across governments. और उसका solution भी जो है, it's going to be multi-year. लेकिन ये बहस पार्लियामान में होनी है, राइट? अगर पार्लियामान 4 मिनट के डिबेट के बाद स्टेट बैंक ऑटोनॉमी बिल पास कर देता है, जो कि हुआ खान साहब की गवर्नमेंट में, फॉर एग्जांपल, और अनदर एग्जांपल इज कि अगर बजट के अंदर एक रिटेलर्स पे टैक्स इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो कि मिफ्ता इस्माइल ने किया, और उस पर मरियम नवाज ट्वीट करती हैं कि मिफ्ता भाई प्लीज लुक इनटू दिस, और अगले दिन वो टैक्स रिवर्स हो जाता है, तो लेट्स बी ऑनेस्ट, इट्स नॉट गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम दैट वी हैव एट हैंड. Okay, I'm just going to seek a yes or no question because हमने इसमें बहुत वक्त गुजार दिया, and I'd like to sort of move on as well. Charter of economy, yes or no? No, I mean there can be an agreement on basics. Again, वो पार्लियामान में होनी है ना कि जी पॉलिसी फ्रेमवर्क क्या होगा बेसिक इश्यूज पे. ये तो नहीं हो सकता. See, you can have an agreement on saying we need macroeconomic stability, लेकिन that's fine. बट चार्टर ऑफ इकोनॉमी जो पाकिस्तान में अप्रोच किया जा रहा है कि जी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का फ्रेमवर्क और द वेज टू अचीव दिस इज एक्स, और सबने उस एक्स पे अचीव करना है, दैट कैन नॉट बी डन because there obviously will be disputes about how, whether it's X or Y or Z is the optimal path, और ये debate parliament में होना है, और I don't think economy पे charter is anything that's going to go anywhere. Okay, so I also am not in favor of it simply because I think every political party should have a separate economy manifesto. I mean, we can talk about the basics again. That's the job of Parliament as well. But I want to move on here now, क्योंकि मईशत के हवाले से बहुत सारे सवाल तो होते रहते हैं, लेकिन एक और मेरे ख्याल में another, I would say that एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम जो पाकिस्तान में रहा है वो सेंसरशिप का रहा है, चाहे आपका न्यूज मीडिया हो और चाहे आपकी arts and film, and that came to the fore with Joyland, a film that has actually done really well internationally. Cannes Film Festival, maybe it had a showing, it won a prize, it got a standing ovation. Executive producer Malala Yousafzai is one of the executive producers, and she wrote a really great piece in Variety actually about how Joyland, because after passing censor boards across the country, अचानक से पता चला कि जो इस्लामाबाद की censor board है या federal censor board है has put a stop to the movie. There was a lot of social media campaign that's being spearheaded primarily by Jamaat Islami, और फिर जाहिर है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान भी पीछे नहीं रख सकते because they have a competing electorate and vote bank, I would say, and a constituency. साथ-साथ I think interesting ये भी था कि we have a fashionista, Maria P, who also opposed the transgender bill and opposed the release of the film Joyland as well. So after much lobbying and a lot of discussion and a lot of pressure from filmmakers on social media, from influential people, eventually a committee bhi bani thi, और Salman Sufi, who is an advisor to the Prime Minister, also announced that it had been passed. However, at the last minute, because the film was released over the weekend, this weekend, और अभी कराची और इस्लामाबाद में तो रिलीज हो चुकी है, पंजाब ने अचानक से कहा कि फिल्म नहीं रिलीज होगी. Now, Joyland is a movie, I watched the trailer. I was actually really excited to see it there, and I will be going next weekend. But I will say that I think the problem here is not just one film. It's a series of films that have been censored again and again, especially in the last few years. इसमें जिंदगी तमाशा भी है. Sarmat Kusat was a director as well. 2019 में release होनी थी. It still hasn't seen the light of day. And in fact, Sarmat Kusat की एक और film आई थी, which also actually had a really sort of controversial. It wasn't your standard formulaic film, so that did really well. And it was released, but Zindagi Tamasha was censored. Isi Zimme, because obviously Saim Sadek, who's the director of Joyland, and the various actors were very busy with the release of the film. I did speak to Ali Sajjad, who's the director of a film called Javed Iqbal, The Untold Story of a Serial Killer. और जावेद इकबाल, अगर आपको नहीं पता, मैं थोड़ा सा एक लाइन में बता देती हूँ. He allegedly killed 100 children back in the 90s. It was a big case, and a lot of people have talked about it. There's also a great investigative piece that I think was done for BBC Urdu. I would recommend anybody to check it out. It's long form.
But given the interest in serial killers and true crime, and very recently the controversy over Jeffrey Dahmer, which was released on Netflix, you would have thought that Pakistan has its own real horror stories, real life horror stories, and what they tell you about society and all of that. This film was also censored. It had a few of the same problems. I spoke to Ali Sajjad earlier, and has some really interesting things to say. और उन्होंने निशानदेही की थी कि मसला क्या है. वो कहते थे, I think Uzair, आप भी सुने, and then we can talk about it after it ends. जोक्स ना कोई. एक मच्छर ਨੂੰ ਮੁਰਗੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ. ਮੱਛਰ ਤੇ ਮੁਰਗੀ ਨੇ ਪੱਪੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੱਛਰ ਬਰਡ ਫਲੂ ਤੋਂ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁਰਗੀ ਡੰਗੀ ਤੋਂ. ਪੁੱਛ ਕਿਉਂ? क्योंकि मोहब्बत का अंजाम मौत है. अच्छा नहीं लगा? बिल्कुल नहीं. तो असल सवाल तो पूछो. असल सवाल ये है कि आया 100 ही बच्चे मारे या ज्यादा मारे, कल्ले मारे या नाल कोई होर भी था. और सबसे अहम सवाल जो ना कोई पूछता है ते ना किसी को पूछने की इजाजत है कि जितने बच्चे अगवा किए सारे ही मार दिए या कोई बच भी गए. जी अली, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया नाजुक मोड के लिए. सबसे पहला सवाल मैं इस वक्त जानना चाह रही हूँ, जॉयलैंड पे कई बार इस वक्त जो मोड़ हमें नजर आए थे वो ये थे कि क्लियरेंस मिल गई थी विफाक की तरफ से, अचानक से पंजाब हुकूमत या पंजाब सेंसर बोर्ड ने उसको रोक दिया, उसकी रिलीज को. ये आपकी फिल्म के साथ भी हुआ था जो आपने जावेद इकबाल पे बनाई थी. ये कुछ मुमासलत क्यों है? ये क्या क्या हो रहा है पीछे? थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता सकते हैं? जी अंबर, हमारे और जो जॉयलैंड के केस में थोड़ी सा डिफरेंस इस सेंस में है कि हमारी जो फिल्म थी जावेद इकबाल, उसको सिंध सेंसर बोर्ड में हमने सबसे पहले पेश किया और उन्होंने पास कर दी. पंजाब गवर्नमेंट ने भी पास कर दी, लेकिन फेडरल ने हमारी फिल्म को पास ही नहीं किया था. फेडरल में हमने फिर फुल बोर्ड की रिक्वेस्ट की और फुल बोर्ड ने भी फिल्म को देखने के बाद उसको डिक्लाइन कर दिया कि हम इस फिल्म को रिलीज की परमिशन नहीं देंगे. और हमने फिर इस फिल्म को सिंध में रिलीज कर दिया. पंजाब में वी आर अबाउट टू कि हम उसका प्रीमियर करने वाले थे, तो पता लगा कि पंजाब गवर्नमेंट ने भी इस फिल्म को बैन कर दिया. फिर कुछ डायरेक्शंस मिली इस्लामाबाद से सिंध सेंसर बोर्ड वालों को, तो उन्होंने भी इस फिल्म को कर दिया कि जब तक फेडरल से आपका डिसीजन क्लियर नहीं होगा, ना हम पंजाब में इस फिल्म को लगाएंगे ना ही वहां लगाएंगे. जॉयलैंड को फेडरल सेंसर बोर्ड ने भी पास कर दिया था, और सिंध ने भी कर दिया था, और पंजाब ने भी कर दिया था. और जो पॉइंट ऑफ व्यू जो अपनाया साइम ने, वही हमारा भी पहले दिन से रहा, हाई कोर्ट में भी और सबके आगे भी, कि ये कह देना कि सेंसर बोर्ड ने तो फिल्में पास कर दी हैं, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स रिसीव हो चुकी हैं इस फिल्म के कंटेंट से रिलेटेड, इसलिए हम इस फिल्म को रोक रहे हैं. वो समझ से बालातर है कि जब एक फिल्म सिनेमास पे लगी ही नहीं है, लोगों ने देखी ही नहीं है, तो कैसे आप ये कह सकते हैं कि ये जो इसका कंटेंट है वो ऑब्जेक्शनेबल है. जॉयलैंड जो है वो सिंध में रिलीज हो चुकी है, लोग उसको देख रहे हैं, जोक दर जोक हाउसफुल जा रहे हैं. अब अगर कुछ फर्द वाहिद या कोई नुमाइंदा उठ के कोई कंप्लेन करता है, तो चाहे वो कंप्लेन कितनी ही गलत क्यों है, लेकिन एक जवाब बनता है कि हाँ जी, फिल्म देखने के बाद किसी शहरी के जज्बात मजरूह हो रहे हैं. तो जावेद इकबाल का तो ऐसा कोई केस था ही नहीं. अच्छा, ये एक सवाल जो मेरे जहन में भी आया था कि जाहिर है कि 18वीं तरमीम के बाद तो जो सूबाई सेंसर बोर्ड वो तो आजाद है, वो वफाक की तरफ से इशारे का क्यों इंतजार करते हैं? ये तो जवाज ही लगता है, कानून तो कुछ और कहता है. जी जी, इसका जवाब सिर्फ ये है कि अगर आप देखें जो फेडरल सेंसर बोर्ड है और पंजाब का सेंसर बोर्ड है और सिंध का सेंसर बोर्ड जो है, वहाँ पे बहुत ज्यादा जो है वो एक इदारे के रिटायर्ड और सर्विंग अफसरान जो हैं वो मौजूद हैं. आपको कौन से इदारे किसी के? भी जॉनर, एक बहुत अच्छा इदारा है पाकिस्तान का, उसके लोग हैं. तो होता क्या है, होता ये है, ये एक बड़ा फन फैक्ट है कि जब भी आप चाहे वो हॉलीवुड की फिल्म सेंसर करवाएंगे, चाहे वो रीजनल फिल्म कराएंगे, या आप उर्दू लैंग्वेज की फिल्म कराएंगे, तो जो कमेटी कंस्टिट्यूट होती है कि ये लोग आपकी फिल्म को देखेंगे, उसमें उस इदारे का एक सर्विंग या रिटायर्ड अफसर लाजमी मौजूद होता है. तो जब वो उनमें से किसी एक के माथे पे जो शिकन नमूदार हो जाती है फिल्म देखने के बाद, तो फिर वो कोशिश करते हैं कि ये शिकन जो है वो बाकी तमाम मेंबरान के जो माथों पे हैं उनको भी नमूदार कर दी जाए. मैं आपको ये जावेद इकबाल क्योंकि कंटेंट पे था और
یاسر حسین اور عائشہ عمر تھے، لیکن یہ شنو گئے تھا. اس ریئیکشن میں ایک چھوٹی سی فلم بنائی تھی، اور وہ فلم اس وقت لک اسٹائل ایوارڈ میں فلم آف دا ایئر کے طور پہ نامینیٹ بھی ہے. اس فلم کو بھی فیڈرل لے کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے عورتوں کے لیے غیر محفوظ ملک ہے. اور مزے کی بات ہے کہ جب اس فلم کو انہوں نے میں آپ اسلام کو آباد اگر میں کو یہاں روک دوں، صرف علی اس سوری، میں ایک آپ کو روک رہی ہوں وہ اس لیے زیادتی کیونکہ کے جی آئی ایم ریلی سوری، میں آپ کو یہاں روک رہی ہوں اس لیے کیونکہ میرا انٹرنیٹ کنیکشن جو ہے نا اسٹیبل نہیں تھا. لیٹ می سوئچ. اور یہ اگر بات آپ دوبارہ سے شروع کر سکتے ہیں بیکاز آئی تھنک نو اٹس ریلی امپورٹنٹ یس آپ کا جو پوائنٹ تھا. جی جسٹ سوئچنگ. ہیلو ہاں جی، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ویٹ. اچھا، اب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی علی، آئی تھنک آپ جی سے ہی. آواز آ رہی ہے آپ؟ ہاں بالکل، مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. جی تو میں کہہ رہا تھا کہ جاوید اقبال جو ہے وہ میری پہلی فلم نہیں ہے جو بین ہوئی. وہ تو عائشہ عمر اور یاسر حسین جیسے بڑے سٹارز کی وجہ سے اور سیریل کلر کے سبجیکٹ کے اوپر ہائی لائٹ ہوگی. اور جوائلینڈ سے تو بہت ہی بڑے لوگ وابستہ تھے، اور اس فلم کا جو اس کو جو کریٹیکلی کلیم ملا ہے دنیا میں بہت بڑا ملا ہے. اس سے پہلے میری ایک فلم ہے شنو گئے کے نام سے، جو لاسٹ ایئر کووڈ کے بعد ریلیز ہوئی تھی. ابھی اس سال وہ فلم آف دا ایئر جو ہے وہ لک اسٹائل ایوارڈز کے لیے نامینیٹڈ بھی ہے. اس فلم کو بھی فیڈرل سینسر بورڈ نے یہ کہہ کر اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا نمائش کی، کہ ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ فلم میکر نے اس فلم کے ذریعے سے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ عورتوں کے لیے غیر محفوظ ملک ہے، اور اس میں ہمارے اسلامی تشخص جو ہے اس کے پرخچے اڑا دیے گئے، اور اس قسم کی کچھ انہوں نے وہ کیے تھے. لیکن یہ ہوا تھا کہ وہ فلم جو ہے بہت زیادہ کٹنگ کے بعد پنجاب میں بھی لگی تھی اور کراچی سندھ میں بھی لگی تھی. اسلام آباد فیڈرل بورڈ نے اس پہ انٹرفیئر نہیں کیا تھا. اس کے اوپر ایک فن فیکٹ ہے میں شیئر کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی اداروں کی انوالومنٹ کے حوالے سے، مجھے نہیں پتا یہ کتنا سچ ہے کتنا صحیح ہے. میرے پاس جو لیٹرز آتے ہیں اس میں ڈیفینیٹلی اس ادارے کے افسران ہوتے ہیں کہ یہ بھی آپ کی فلم دیکھنے آئیں گے، اور میری ان سے بہت ملاقاتیں ہوئی ہیں. تو پوائنٹ یہ ہے کہ ہماری فلم جو جاوید اقبال بین ہوئی، تو ہماری فلم کو جو ریلیز کیا گیا تھا، وہ یہ آن دا ریکارڈ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہماری فلم کو جو ریلیز کیا گیا تھا وہ سندھ سینسر بورڈ کے ایک بڑے سینئر ممبر ہیں، آفیشیل ممبر ہیں، عمر خطاب صاحب، انہوں نے ریلیز کیا تھا. اور 15 لاکھ روپے ہم سے لے کے فلم کو لگایا. پھر بعد میں انہی کی متعدد اسٹیٹمنٹس موجود ہیں ہمارے پاس کہ آپ کی فلم کو فیڈرل سینسر بورڈ کو آپ کی فلم سے مسئلہ نہیں ہے، ISI کو آپ کی فلم سے مسئلہ ہے، اور انہوں نے اس کو بین کیا. پھر عمر صاحب نے ہمیں یہ بھی کہا اور پروڈیوسرز کو بھی کہا کہ آپ اگر مجھے ایک سرٹن اماؤنٹ آپ ہمیں دے دیں تو میں جاوید اقبال جو ہے وہ میں آپ کو سندھ سے جو ہے ان بین کروا دوں گا. وہاں پہ علی کوئی بریگیڈیئر صاحب ہیں علی سندھ کے. آپ تو رشوت کا الزام لگا رہے ہیں. نہیں میں الزام نہیں لگا رہا ہوں، میں آپ کو میں فیکٹ بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ سندھ سینسر بورڈ میں کوئی بریگیڈیئر صاحب ہیں جو ممبر ہیں، تو انہوں نے آپ کی سندھ میں فلم بین کروائی ہے، اور آپ اگر مجھے 1 ملین دے دو تو میں آپ کی یہ فلم جو ہے سندھ سینسر بورڈ سے میں کروا دوں گا ان بین. آپ کو یاد ہوگا بھی ریسنٹلی ایک فلم کا بڑا مذاق اڑا تھا کنڈلی نہ کھڑکا کے نام سے. جی بالکل، یہ جب وہ ایک سارٹ آف سافٹ جوائے پورن، لینڈ کی جو کے جی حوالے سے وہ ایک سینٹرل. سافٹ پورن فلم ہے، اس کے آپ گانے کھا کے دیکھ لیں وہ بہت ہی. جی اچھا، وہ فلم جو ہے وہ اس میں فحش مکالمے ہیں، اس میں بہت ہی نیوڈیٹی ہے، اس میں بہت سا آبجیکشنیبل کانٹینٹ ہے، لیکن وہ فلم جو ہے وہ بغیر کسی کٹنگ کے سندھ میں بھی ریلیز ہوئی، پنجاب میں بھی. وہ بھی انہی صاحب نے ریلیز کی جو سندھ سینٹر بورڈ کے ممبر ہیں. تو ان کا میسج بڑا کلیئر تھا، وہ کہہ رہے تھے بھائی اگر میں یہ فلم چلوا سکتا ہوں تو جاوید اقبال بھی ان بین کروا سکتا ہوں، لیکن بریگیڈیئر صاحب تھوڑے سے غصے میں ہیں تو آپ پلیز. اچھا اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ یہ الزامات کتنے سچ ہیں، لیکن میں نے اس کے اگینسٹ جو ہے نہ صرف FIA میں کمپلین کی، بلکہ میں نے یہ میں آئی ریپیٹ اگین کہ میں نے سندھ سینسر بورڈ کے جو چیئرمین ہے خالد بن شاہین صاحب، میں نے ان کو بھی کمپلین کی ود دا پروف کہ آپ کا ایک ممبر مجھ سے پیسے مانگ رہا ہے 10 لاکھ روپیہ بریگیڈیئر صاحب کے نام کے اوپر، اور وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی فلم کو ISI نے بین کیا ہے اور میں آپ کو پاس کروا دوں گا، آپ مجھے اتنے پیسے دے دیں. اور وہ کمپلین جو ہے آفیشیلی گئی اور ابھی تک اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں ہوا ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس ادارے کی انوالومنٹ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بریگیڈیئر صاحب نے پیسے مانگے ہوں گے، لیکن اگر سندھ سینسر بورڈ کا ایک سرونگ ممبر جو ہے وہ ایک فلم کو ان بین کروانے کے نام پہ پیسے مانگ رہا ہے پروڈیوسر سے اور ڈائریکٹر سے، اور اس کی آفیشیلی کمپلین ود دا پروف کی جاتی ہے،
और 1 महीने से उस पर प्रूफ कार्रवाई जो नहीं की। सबूत तो की आप बात कर रहे थे, क्या ये आपकी कॉन्वर्सेशन कुछ रिकॉर्डेड थी, पैसे की लेन देन जी है, जी, कुछ हमारे इसकी पास कुछ रिकॉर्ड जी है? जी, कुछ वॉइस नोट्स हैं, कुछ स्क्रीन शॉट्स हैं, कुछ उनकी और बहुत सी चीजें हैं, वो सारी की चीजें। फिर ये है कि जावेद इकबाल को लगवाने के लिए उन्होंने हमारे प्रोड्यूसर से 15 लाख रुपए लिए। वो 15 लाख रुपए की जो ट्रांजेक्शन है उनके अकाउंट में हुई है सिंध सेंसर बोर्ड के मेंबर उमर खिताब साहब के, वो प्रूफ भी हमने दे दिए हैं चेयरमैन सेंसर बोर्ड को सिंध के, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो प्रॉब्लम ये है कि मेरा जो पॉइंट ये है कि अली, फिर जैसे लोग जॉयलैंड जो है, आप पे ये भी इल्जाम लगा सकते हैं, मैं थोड़ा सा क्योंकि आप चाहती हूँ कि आपका जो मौकफ है वो सामने आ जाए, वो ये भी इल्जाम लगा सकते हैं कि आप तो रिश्वत दे रहे हैं। नहीं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब हमसे उन्होंने कहा कि आप हमें अगर इतनी अमाउंट दें तो जावेद इकबाल को मैं पूरे पाकिस्तान में रिलीज कर दूंगा, तो फिल्म की रिलीज के नाम के ऊपर आप एक बात को समझिएगा, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात हो रही है कि एक आदमी है जो सिंध सेंसर बोर्ड का मेंबर है, और उसके साथ साथ वो डिस्ट्रीब्यूटर भी है, फिल्में भी रिलीज कर रहा है। वो अपनी उस पावर को यूज करके फिल्में रिलीज करवाता है। तो अगर मैं हूं, आप भी अगर कोई फिल्म बनाएंगे तो आपके लिए भी चॉइस वो सेंसर बोर्ड का मेंबर ही होगा, चलो यार मेरी फिल्म सिनेमा पे लग तो जाएगी, मेरे पैसे तो रिकवर हो जाएंगे। सेकेंड टाइम के ऊपर जब वो 10 लाख रुपया मांग रहे हैं फिल्म को अनबैन करवाने का, वो रिश्वत मांग रहे हैं, वो हमने नहीं दी, और वो उसके अगेंस्ट हमने कंप्लेन कर दी। अच्छा, यहाँ पे मैं एक पॉइंट बड़ा क्लियर करना चाहता हूँ। जी। जैसे जॉयलैंड के बारे में है कि उस फिल्म को बैन किया गया और फेडरल ने फिर उसको पास भी कर दिया, फुल बोर्ड ने, और पंजाब ने बैन कर दिया। तो कभी भी साइम आपको कैटेगोरिकली ये नहीं बता सकेंगे कि ये किसी एक आदमी का प्रॉब्लम है या स्टेट इसमें इन्वॉल्व है। सिमिलरली हम जब बात करते हैं तो हमें भी नहीं पता, मुझे भी एज अ डायरेक्टर या जावेद इकबाल के प्रोड्यूसर को नहीं पता कि क्या वाकई जैसे उमर साहब फरमा रहे हैं कि ये आईएसआई है और ब्रिगेडियर साहब ने आपकी फिल्में बैन करवाई हुई हैं, या उमर साहब हमसे पैसे इंटरना चाहते हैं। लेकिन हम ये रिक्वेस्ट जरूर कर चुके हैं 1 महीने से, एफआईए से भी और सिंध सेंसर बोर्ड के चेयरमैन खालिद बिन शाहीन साहब से भी, कि प्लीज इस सीरियस एलिगेशन को प्रोब तो करें। एक इदारे का नाम बदनाम हो रहा है, आपके इदारे का नाम बदनाम हो रहा है, तो प्रूव इसको प्रोव तो कीजिए। हमें भी तो हम भी जानना चाहते हैं कि क्या हमारी फिल्म को स्टेट ने बैन किया है, किसी इदारे ने बैन किया है, या क्या सर उनका एक मेंबर हमसे पैसे लेने के लिए हमें ब्लैकमेल कर रहा है। लेकिन उसके ऊपर किसी किस्म का कोई वो नहीं है। तो इसमें इसमें मैं आपको यहाँ रोकती हूँ। जो मसला जो लग रहा है, चाहे जॉयलैंड हो, चाहे जावेद इकबाल फिल्म हो, चाहे जिंदगी तमाशा हो, इसमें जो फिल्म्स और आर्टिस्ट के लिए मुश्किलात हैं, एक ये है कि सेंसर बोर्ड और उसका तरीक़ाकार और उसके मेंबरान पे शुकूक व शुबात हैं। उनकी मेंबरशिप कौन किसकी है, उनकी क्या अहलियत है, उस पर भी सवाल है। जी आप कुछ इल्जामात जो लगा रहे हैं उसमें पैसे और रिश्वत का भी मामला है, और साथ साथ एक जी नजरियात का भी मामला है कि अगर रियासती कुछ एहलकार हैं जो इन सेंसर बोर्ड्स में शामिल है, उनको एतराज होता है, तो वो किस तरह से मुबैना तौर पर, आपका कहना है कि मैनिपुलेट करते हैं। क्योंकि कुछ बिल्कुल। लोग तो ये भी कहते हैं, दावा करते हैं कि जो ऐसी मजहबी जमातें हैं या लोग हैं या अफराद हैं जो इन फिल्मों के खिलाफ कैंपेन चलाते हैं, वो पेड कैंपेन्स होती हैं। जॉयलैंड के कुछ एक्टर्स ने भी इल्जाम लगाया है। ये बात आपको कुछ दुरुस्त दुरुस्त लगती है कि उनको लीक किया जाता है, फीड किया जाता है, बताया जाता है, या आपको लगता है कि वो खुद से ही क्योंकि उनकी जो सियासत है, उनकी सियासत कल्चर वॉर्स पे जिसको कहते हैं ना, कि वो ट्रांसजेंडर बिल है उसके खिलाफ भी वो मुहिम चलाएंगे, वो फिल्मों के खिलाफ भी मुहिम चलाएंगे? देखिए, आपसे बेहतर कौन जानता है कि इस मुल्क में मजहब के नाम के ऊपर और पेट्रोटिज्म के नाम के ऊपर आम पब्लिक को सेंटिमेंटल करना और उनके जज्बात को प्रोवोक करना कितना आसान है। मेरी इसके ऊपर एक छोटी सी लास्ट टाइम भी जो मेरी इस्लामाबाद में सेंसर बोर्ड के कुछ सीनियर लोगों से मुलाकात हुई थी, मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की थी कि या तो आप ये जो आपने एक फर्जी बनाया हुआ है, एक प्रोसीजर रेटिंग्स के नाम के ऊपर, और सारा आपने जो दुकान चलाई भी है, और बाद में आप एक मैसेज के थ्रू और एक लेटर सोशल मीडिया पे डाल के पूरी फिल्म को आनन फानन बैन कर देते हैं, और फिल्म मेकर्स को भी पता लगता है थ्रू सोशल मीडिया, जब स्क्रीनशॉट पे भेजता है कि आपकी फिल्म जनाब बैन होगी, आपको पता भी है नहीं है। तो प्लीज इसको खत्म कीजिए। मैं अभी लास्ट ईयर तेहरान गया था ईरान में, तो मैंने कहा आप या तो, हम तो कहते हैं कि या तो अगर आपको ऐसी डिक्टेटरशिप ही लेकर आनी है और आपको ऐसी मतलब नानियत का मुजाहरा करना है, तो आप ईरान वाला सेटअप लेकर आ जाएं कि आप अगर ये फैसला करना चाहते हैं। प्रॉब्लम क्या है अंबर, कि जो जो लोग हैं, जो भी वो लोग हैं जो सेंसर बोर्ड को रन कर रहे हैं या जो ये फैसला करते हैं कि ये फिल्में बैन होनी चाहिए, वो चाहते हैं कि फिल्मों का जो कंटेंट है वो हम तय करें, हम डिसाइड करें कि किस मौजू पे कैसी फिल्म बनेगी। तो मैं ये कहता हूँ कि ये बहुत आसान कर दीजिए खुदारा, आप एक ईरान की तरह का सेटअप लेकर आ जाएं कि हम आपको पहले अपना स्क्रिप्ट दे दें, आप स्क्रिप्ट को पढ़िए। जैसे ईरान में होता है कि स्क्रिप्ट पहले मिनिस्ट्री में जाता है, वो उसको प्रोब करते हैं, पढ़ते हैं, वेट करते हैं, जहां जहां उसको चेंजेस करवानी होती है, कैरेक्टर, सिचुएशंस, कहानी,
3 से 4 बार वेट करवाने के बाद फाइनली वो एक स्क्रिप्ट को अप्रूव करते हैं कि जाओ यार ये है हमारी स्टेट की पॉलिसी और हमारे मूड के हिसाब से फिल्म जाके बना लीजिए। और जब फिल्म बन के आती है तो सिर्फ देखते हैं कि जो स्क्रिप्ट हमने अप्रूव किया है ये उससे मैच करता ही नहीं। तो अगर आपको ऐसा ही करना है तो फिर ऐसे कर लीजिए। अब हम यानी फिल्म कि बना आपका लेते कहना है, हैं। आपका आपका मैंने यही कहने का दावा है कि अगर आपने खुलकर अथॉरिटेरियन हुकूमतों की तरह करना है तो खुल के आए। ये एक नहीं जो है, पर्दा डला हुआ है कि एक प्रोसेस है, एक अमल है, वो सेंसर नहीं होने बोर्ड्स हैं, चाहिए। वो और नहीं ये होना चाहिए। मतलब हम जी मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको कि जावेद इकबाल के ऊपर अगर ये कहा जाता है कि जी ये फिल्म खराब है और इसमें से ये पॉइंट्स निकाल दीजिए, ये सीन निकाल दीजिए, और जॉयलैंड के ऊपर भी कहा जाता है कि इसमें ये अल्फाज या ये मनाजर आप निकाल दीजिए, तो मैं भी इसको अंडरस्टैंड करूंगा, चाहे हम एग्री करते हैं या नहीं करते हैं, और साइम भी इसको अंडरस्टैंड करेंगे। लेकिन ये कहना है कि नहीं जावेद इकबाल फिल्म जिस तरीके से आपने बनाई है इसमें ये आपने गलत कर दी, इसमें आप ये वाला भी वर्जन डाल दें, ये वाला भी वर्जन डाल दें, उसका भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लें और इसकी जो ये चीज इसको यूं कर दें, तो फिर हम सोचेंगे आपकी फिल्म पास करें या ना करें। तो आई थिंक ये बड़ा गलत हो जाएगा। आप नहीं डिसाइड करेंगे, सेंसर बोर्ड के मेंबरान को डिसाइड नहीं करना है कि हम लोग जो है किस मौजू के ऊपर कैसी फिल्म बनाएंगे। ये थोड़ा सा एक मसला है। या तो आप फिर खुल के सामने आए, स्क्रिप्ट को अपने हाथ में ले लें, आप वेट करें कि जी आप पहले स्क्रिप्ट हमें बताएं आप बनाने क्या चाह रहे हैं, हम उसको ठीक वेट है, करेंगे और बना लें। ठीक है। ये है। आखिर में जो एतराजात आते हैं और मैं चाहूंगी कि आप उसका जवाब दें। जावेद इकबाल ट्रू क्राइम जाहिर है बहुत मकबूल है, चाहे नेटफ्लिक्स हो चाहे पॉडकास्ट हो। इस किस्म के जो सीरियल किलर्स होते हैं उनमें काफी लोग देखते हैं। जेफरी डामर एक मिसाल है जो नेटफ्लिक्स पे देखी गई, लेकिन बहुत लोग एतराज भी करते हैं कि हम इन जैसे भयानक या जो जानवर जैसे लोग हैं उनको हम ग्लोरीफाई कर रहे हैं। फिर दूसरी तरफ जो जॉयलैंड जिंदगी तमाशा भी हो गई अगर हम बात करें, उन पे एतराज उठता है कि आप या तो एक खास किस्म की जो हमारे क्या कहते हैं मुआशरे में फैमिली वैल्यूज हैं उनके खिलाफ जा रहे हैं, आप मजहब की बुनियाद पर लोगों को उकसा रहे हैं। इसका आपके पास क्या जवाब होगा, क्योंकि एतराजात देखिए मुख्तलिफ मेरे होते हैं, पास फिल्म की नौयत के पर डिपेंड करते हैं। देखिए मेरे पास इसका एक सादा सा जवाब है कि जिंदगी तमाशा जो है वो एक कमर्शियल सिनेमा नहीं था, वो एक ऑफ बीट सिनेमा था। सरमद साहब ने जो है दिखाया कि एक आदमी जो मजहबी बैकग्राउंड का हामिल है, उसकी फैमिलीज के अंदर क्या मसाइल हैं, क्या उसको मौसीकी सुनने का हक है या नहीं है, उसकी जो अपनी प्राइवेट लाइफ है उसमें वो किसी को हार्म किए बिना, अपने पड़ोसी से लेकर अपने जानने वालों से लेकर अपनी औलाद से लेकर किसी को भी हार्म किए बिना अगर वो कुछ म्यूजिक लगा के कुछ अपने अपने लिए कुछ खुशी के लम्हात कशीद कर रहा है, तो उससे माशरे को प्रॉब्लम क्यों हो रही है। जॉयलैंड के अंदर आपने दिखाया है कि एक आदमी जो है वो घर से निकलता है और वो जाता है एक थिएटर के अंदर, और वो एक ट्रांसजेंडर जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उसके साथ उसकी एक दोस्ती डेवलप हो जाती है। क्या ट्रांसजेंडर आपके माशरे का हिस्सा नहीं है? वो जो लाखों के लोग हैं, क्या उनकी लाइफ से मुतलका जो स्कैंडल्स हैं या इससे भी घिनौनी बातें क्या यहाँ पे आए दिन सामने नहीं आती हैं, उन पे टॉर्चर से लेकर क्या। तो अगर एक लतीफ एहसास को लेकर अगर कोई चीज़ बनाई जा रही है तो उस पर बात करने में क्या मुजायका है, उसको देखने में क्या मुजायका है। आप देखने के बाद एतराज करें। जावेद इकबाल के ऊपर हमें कहा गया कि आपको पता है कि जावेद इकबाल जो है वो बच्चों के साथ क्या करता था और ये उसकी लाइफ थी, तो आपने उसको ग्लोरीफाई किया है। तो मैंने उन साहब से कहा कि क्या आपको ये पता है कि हमारी फिल्म जो जावेद इकबाल है उसमें सिरे से कोई बच्चा ही नहीं है पूरी फिल्म के अंदर। हमने जावेद इकबाल का जो क्राइम्स थे उस पर बात ही नहीं की है, हमने सिर्फ ये बताया है कि जब वो पुलिस की हिरासत में गया है और पुलिस ने उसको इंटेरोगेट किया है तो उसका जो स्टेट ऑफ माइंड क्या था। और उसके पीछे भी हमारा मकसद यही था कि बजाय किसी किस्म की सनसनी फैलाने के बजाय सिर्फ एक आपको पता लगे कि जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जावेद इकबाल बनाने का यही था कि जब हम हमारे पास से ऐसा आदमी गुजर के चला जाएगा और हमें नहीं पता लगेगा कि ये इतना बड़ा सीरियल रेपिस्ट हो सकता है बच्चों का, तो आप इस फिल्म को देखिए और आप अपने इर्द गिर्द देखिए कि आया कोई ऐसा बंदा आपके इर्द गिर्द मौजूद तो नहीं है, रिश्तेदार की शक्ल में, मुलाजिम की शक्ल में, हमसाये की शक्ल में। तो खुदारा अपने बच्चों को ऐसे लोगों के लम्स से और कुर्ब से बचाइए। ये हमारा एक गोल था। अब फिल्म किसी ने देखी नहीं है क्योंकि जावेद इकबाल ने एक्चुअली क्या किया था, ये रिज्यूम कर रहे हैं कि हमने सारा का सारा वही दिखाया होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड मैंने जो आइलैंड नहीं देखी है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि उस फिल्म को देखे बिना जिस किस्म के तबसरे किए जा रहे हैं मुझे नहीं लगता कि वो सच होंगे। क्योंकि फेडरल सेंसर बोर्ड जिसने जावेद इकबाल जैसी फिल्म को भी पहले सिंगल हैंडेडली अपने 5 पैनल में और बाद में फुल बोर्ड में भी रिलीज करने से इनकार कर दिया था, फेडरल सेंसर बोर्ड ने भी जॉयलैंड को पास कर दिया था। तो इसका मतलब ये है कि उसमें ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अली।
افسوس یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں جو بہت سارے آپ جیسے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں جن کو بین الاقوامی سطح پر بھی پذیرائی ملتی ہے. آپ کی فلم جو ہے جاوید اقبال وہ بھی ایک مثال سامنے ہے کہ یو کے فلم فیسٹیول میں بھی یاسر حسین جو لیڈ ایکٹر ہے ان کو بھی اوارڈ ملا, جوائے لینڈ کو بھی کئی بین الاقوامی اوارڈز ملے. لیکن پاکستان میں کچھ جو آپ نے جیسے بتایا ہمارے جو اسٹرکچرل پرابلمس ہیں اور شاید آرٹ اور فلم کے حوالے سے ایک مس انڈرسٹینڈنگ میں نہیں کہوں گی, بالکل سمجھ نہیں پاتے کہ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے اور کیوں ہونا چاہیے اور اس کی ضرورت کیا ہوتی ہے. وہ طاقتور عہدوں پر فائز ہیں اور وہ کنٹرول کر سکتے ہیں پردے کے پیچھے فلمز اور وہ کس طرح بننی چاہیے اور ان میں کیا ہونا چاہیے. سو آئی ریئلی وانٹ ٹو تھینک یو فار یور آنیسٹی اینڈ فار ٹاکنگ ٹو می. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. تھینک یو. Fascinating interview, Amber. I have some thoughts in terms of censor ka pura process, but first would love your thoughts on the conversation. What stuck out to you, and what are the issues that need resolution over here? So I think میں تو پیرلل ڈرا کروں گی آرمی چیف کی تعیناتی سے, اس لیے کیونکہ جو سینسر کا پورا طریقہ, and I just want to say that, you know, early in my career as a journalist, I actually did a story on the censor board as well. So I'm kind of familiar with the process and how it's done. It is not transparent. There is definitely no need for members of the military or the intelligence to be on that board, but they are, and that's increased actually over the years. There are a lot of people who get that job, jo committees mein members hote hain, simply, you know, to favor people. It's a political appointment, unko samajh mein nahi hoti film ke bare mein, and you know, it just it makes, and I think Sharmeen Obaid-Chinoy said something really wonderful. She said ke in response to Joyland being banned as well, and I think that is the reflection that I would have, is ke, you know, just trying to make films and art in Pakistan is actually an act of resistance and bravery, and it's tragic. But with these simple si cheez. Yeah, I agree, and I think this is the big problem in terms of our broad approach to governance. آپ نے آرمی چیف سے اس کی بات جوڑی, میں اس کو ہماری جو معیشت پہ بات چل رہی تھی اس سے جوڑ دیتا ہوں, یا فارن پالیسی سے جوڑ دیتا ہوں. فار ایگزامپل, نیٹ فلکس کا ساؤتھ ایشیا بجٹ لاسٹ تھا, آئی تھنک 12 مہینے پہلے, بیفور دی ساری ٹیک اسٹاکس کے ساتھ جو مسئلہ ہوا, واز رفلی $1 billion. ڈزنی ہاٹ اسٹار ہیز رفلی a similar budget. تو لیٹس assume کہ کیومولیٹیولی گلوبل کانٹینٹ پروڈیوسرز جو ہیں, جو گلوبل کانٹینٹ کمپنیز ہیں, وہ $2.5 ارب جو ہیں سالانہ ان کا بجٹ ہوا ہے ساؤتھ ایشیا کے کانٹینٹ کے لیے صرف, کیونکہ اتنی بڑی مارکیٹ ہے, مارکیٹ انڈیا میں بیسکلی, رائٹ. اور پاکستان میں ہم کہتے ہیں ہماری معیشت خراب ہے, ہمیں ڈالرز کا ایکسیس چاہیے, ہمارے یہاں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, نوکریاں چاہیے. You know, movies and films and drama and art create a lot of jobs because they are labor intensive jobs, right? Lighting کے لیے بھی آپ کو 3-4 لوگ چاہیے ہوتے ہیں, فار ایگزامپل. تو آپ ایک ملک کے اندر جہاں ساؤتھ ایشیا میں $2.5 ارب کا پول ہے, آپ جو پروسیس ہے آپ کی سینسرشپ کا یا آپ کی اپروچ ٹو گورننس آن آرٹس اینڈ کلچر اینڈ میڈیا جو ہے, اٹ کریٹس اے بیریئر, which means that you are not going to get anything remotely to the potential of the money that you should be getting in terms of an investment to create this art, right? Number one. Number two, یہ کہ کیونکہ یہ ساؤتھ ایشیا کا بجٹ ہے اور آپ نے اپنے آپ کو اس مارکیٹ سے الگ ہی کر دیا بیکاز آف دس ایشو, جو کانٹینٹ کریٹ ہوگا وہ زیادہ تر انڈیا پہ فوکس کرے گا, کیونکہ obviously it's the biggest market, وہاں گروتھ ہے, etc. Even though Indians love Pakistani dramas, all of that stuff, right? پھر آپ کمپلین کرتے ہیں کہ جی دیکھیں انڈیا کی جو لابی ہے, انڈیا کا جو نیریٹو ہے, انڈیا کا جو ایجنڈا ہے, وہ مغرب کے اندر جو ہے وہ ہر جگہ پھیل رہا ہے. وہ کیوں پھیل رہا ہے بھائی؟ $2.5 ارب ہیں, وہ انویسٹ ہو رہے ہیں, وہ انڈیا کا کانٹینٹ بن رہا ہے, ان کی حکومت اسمارٹ ہے, وہ کہتی ہے آپ جو ہے نیشنل ٹریجر ٹائپ موویز بنائیں لیکن ہماری ہسٹری, ہماری ہیریٹیج سے ریلیٹڈ بنائیں, رائٹ. باقی آپ نے ڈرامے بنانے انڈین میچ میکنگ طرح کے, وہ بھی کریں, لیکن یہاں بھی تھوڑا پیسہ خرچ کریں, تو آبویسلی نیریٹو بڑھتا ہے. تو یہ ایک عجیب سی اسٹریٹجی ہے پاکستان میں. ایک عجیب سی جو آپ نے بات کیا, جس پر پوائنٹ آؤٹ کہ یہ تو ہوتا ہے نا. سو جیسے علی سجاد نے ایک جو واقعہ بتایا تھا کہ ان کی تو سجیشن یہ تھی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جیسی جو نظریاتی ہماری جو سرحدیں ان کے محافظ ہوتے ہیں, وہ تو اگر آپ ان کو یہی بتاتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک خاص قسم کی فلم یا خاص موضوع پہ فلم ہو, یا تو آپ ہمیں ایک اپروو اسکرپٹ دیں اور یہ ایک پروسیس ہو, ہمیں پتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے.
यहाँ तो कुछ भी, there's nothing written down. Everything is so shrouded behind this curtain of and power pull that you don't know what to do. You have to either pay money, you have to go to courts, you have to pressure, use public pressure, use media pressure. आप ये कहकर थक हो जाते हो कि we need, look at the recognition these films are getting internationally. Look at our talent that's going abroad. You still want that soft power that India has, but you don't give it the room to flourish. You want to control information and media, but you don't give it the room to, I mean, you don't understand why Indian films resonate or why Indian films make it big, or they dominate places like Netflix. It's because you give artists freedom and liberty to explore their talents and touch on what may be taboo and sensitive topics. हर बार ये कह जाते हैं कि नहीं, पाकिस्तान का इमेज खराब हो जाएगा. अरे भाई, पाकिस्तान का इमेज खराब इस तरह से नहीं होता कि आप इन चीजों की तशहीर करें या बात करें या तनकीद करें या सवाल उठाएं. पाकिस्तान का इमेज इस चीज से खराब होता है कि आप रोकने की कोशिश करें. बिल्कुल, आई एग्री. एंड आई थिंक अगेन ये जो है उल्टी स्ट्रेटजी है कि अगर आप अज्यूम करें 10 मूवी साल की बना रहे हैं और अगर 9 में से 10 कमर्शियल सक्सेस होती हैं विच यू मे नॉट लाइक फ्रॉम आइडियोलॉजिकल कंजर्वेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन उन 9 का सक्सेस और प्रॉफिट जो है वो फिर 1 में से 10 ऐसी मूवी बनाएगा जो आपकी जो नैरेटिव है उसकी अक्कासी करे, राइट? यू हैव टू क्रिएट एन इंडस्ट्री फर्स्ट. लेकिन अगर आप इंडस्ट्री को पहले से ही जो है वो शैकल कर दें और ना उसमें बाहर से पैसा आएगा, ना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, ना ग्लोबल रिकग्निशन मिलेगी, ना कमर्शियल सक्सेस होगा, तो फिर यही होगा कि आप कहेंगे कि टैक्स पेयर के पैसे से आईएसपीआर ने एक फंड की मूवी और वो हमने देखी और वो चल गई और वो दुनिया में तो देखी नहीं जाएगी, एंड देन वी विल कंप्लेन कि हमारा नैरेटिव नहीं बिकता. तो आई थिंक इट्स अ really ridiculous approach to things like this. And my personal view, obviously I've written about this, tweeted about this, I'm a free speech extremist. You have to allow people to say what they want in a country that is as diverse as Pakistan, that is as young as Pakistan, that needs as much disruption as Pakistan needs. And this type of approach to पॉलिसी मेकिंग के जी पहले अप्रूवल दे दिया, फिर ट्रांसजेंडर बिल आ गया तो हमने बैन कर दिया. I just made a point here because I do agree with you, and there's a way to sort of find that balance as well. I'm going to give you an example of Hollywood. Hollywood में भी वहाँ, क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका में भी उतने ही शायद मजहबी जुनूनी है जहाँ पाकिस्तान में, but no, who objected to the kinds of films the 30s or 40s में were showing sexuality, for instance. And you had, the government at the time actually restricted the way that men and women interacted. 50s में, I will add really quickly, McCarthy era में पूरा टारगेट किया गया लेफ्ट विंग की सोच को. Exactly. But what eventually happened was, down the line, was that एक rating system तो होता है ना, where you are PG rated हो जाएगा, 16, 18, etc., or R rated. It tells you what age group can see this film. So that's one way to allow certain films to be, even with limited release, or allow certain age groups to come in. तो ये और क्योंकि हमें ये भी पता है, आपको और मुझे भी पता है और सबको ही पता है कि ये सारा मवाद जो भी आप जिसपे खदशा होता है, डर होता है कि आपका मुआशरा कमजोर हो जाएगा, वो सब अब इंटरनेट पे आराम से लोग देखते हैं. पोर्न हब भी देखते हैं. काके द खड़क जो है वो उसकी अप्रूवल भी आ जाती है, which as many people including Ali Sajjad in the interview that is practically soft porn, वो तुम्हारे सिनेमास पे लगी होती है. Violence मौला जट में जितनी है वो that is acceptable. But no, we can't show transgenders in a nuanced kind of relationship or as human beings with feelings. We can't talk about a serial killer. We can't talk about a man who is religious but struggles with his religiosity and his love of dance or music. I mean, look at how we understand humanity and art, and these are the people who are in control. It just, it really frustrates me. I may have ranted for too long on this. Oh, I think this is a worthwhile rant, and to your point के आधे मुल्क ने Game of Thrones देखा हुआ है डाउनलोड करके टॉरेंट पे. It's the most torrented show in history. तो अगर आपने Game of Thrones अपने मुल्क में देखा हुआ है तो फिर आगे की बात भूल जाएं. Pornhub की भी तरफ जाने की जरूरत नहीं है, Game of Thrones पे ही रहते हैं. Exactly. But
Exactly. It's like everyone. I bet that many people on the censor board have themselves watched Game of Thrones uncensored. So let's leave it at that. Moving on, winners, Or losers. yeah, kaake da khadak. And I will say that among the one of the things that I found when I was doing my piece on the censor board, just very quickly, back in the early 2000s, was कि मुझे कुछ सेंसर बोर्ड के मेंबर्स ने बताया था कि ऐसी फिल्में जिन पे इस किस्म की मवाद होता था, जो सेक्सुअलाइज कंटेंट होता था, तो वो बार बार रोक के उसको देखते थे ताकि वो डिटेल नोट्स ले। वो कट भी शायद जाती थी, लेकिन उसको रोक कर बार बार देखा जरूर जाता था। that's all I'm going to end with. I am not going to do a psyche eval on those people, but moving on to winners and losers. Amber, who are your winners and losers for this week? Okay, so I think anybody who was tweeting about goodbye Twitter, and I know there's a lot of friends of mine who are doing that as well. I apologize if I'm hurting your feelings. Yeah, I'm going to say you're a loser. Simply because it's possible Twitter may end. It's possible कि आपने शायद जो अपने followers, supporters, अपने fan base को आपने एक dramatic सा goodbye करना होगा. But really, at the end of the day, is Twitter really going somewhere? Do you think it's Elon Musk and crash it to the ground like that, or I feel like it just demonstrates a kind of how you feel you're giving that much importance to a social media platform, which is really important in our lives. And to be honest, if it goes, I'd miss it, despite all the trolls. There's definitely a love-hate relationship here again. But those sentimental goodbye Twitter messages were just a bit cringy. या मेरा सेंटिमेंटल शायद ही था, मेरा था बस के कहा सुना माफ कर दें अगर कल बात ना हो, बट I kind of agree with you, but I think there is a real risk of Twitter collapsing in that sense, in terms of the people that have left, in terms of Elon's approach to governing or restructuring that organization. And the example of this is कि अगर आपके मुल्क के अंदर एक ब्रिज है और अगर आप पूरे कोर ऑफ इंजीनियर्स को हटा दें तो इवेंचुअली वो ब्रिज जो है कोलैप्स करेगा, आज नहीं तो कल नहीं तो 10 साल बाद, राइट, अनलेस यू हैव अ कोर ऑफ इंजीनियर्स मेंटेनिंग इट. तो इट्स सिमिलर इन दिस, एंड ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी थिंग्स मूव फास्टर, तो उसका जो स्केल है, उसकी जो सिक्योरिटी है, उसके अंदर जो फॉर एग्जांपल पुलिसिंग ऑफ हेट स्पीच होती है, बॉट्स हैं, वो सारी टीम्स हैव बीन गटेड. So what happens next remains to be seen, but Elon is trying to, some people say he's trying to burn it to the ground. I think he's trying to burn and see what breaks and then build back, based on that analysis, and we'll see. But he's definitely changed things at Twitter as it stands. Yeah, I will miss Twitter though. It's the only social media platform that I use more regularly. I don't think it's going anywhere. So that's the end of it. Aapka loser. My loser this week is SBF from the FTX scandal. Yes, that's a story. Tell me about it, because I've been following it very, very remotely. It's another one of those really interesting econ collapse, rise of this young kid with big ideas. One of those Elizabeth Holmes type stories. That's probably going to happen. Elizabeth Holmes has been sentenced. Yeah, she's going to jail for 11 years, if I remember correctly from the Journal this morning. But SBF, FTX ka scandal, I think it's bigger than Enron. Agar logon ko yaad ho, The Smartest Man in the Room is a wonderful documentary on Netflix. I think still is there. You should watch it, about the Enron scandal. In magnitude, it's bigger than that. And the way it all played out was that FTX and SBF, as the acronym of the founder is known, was really seen as one of the more nuanced, more reasonable crypto bros out there. To the extent that just a few days from now, there was supposed to be a New York Times event where he was going to be sitting with somebody like, I think it was Janet Yellen or some senior people, right? Very high names in American society, for example, in finance. So that was his stature in terms of, he had given a lot of money to the Democrats, had talked about regulating crypto. And then it turned out that basically he was running a massive Ponzi scheme where his exchange, FTX, which is like a stock exchange, this is a crypto exchange, was lending money or doing off-balance sheet activity with Alameda, which was a market maker in the crypto market. तो वो जो unregulated space था, उस पे पैसों की हेरा फेरी इतनी हुई कि $8 अरब का गैप बन गया और पूरी जो exchange है वो collapse कर गई. But correct me if I'm wrong, Uzair.
Correct if I'm wrong. Yeah. No, I just have to sort of, because of the Ponzi scheme, I want you to finish this because this has been fascinating. Didn't he admit that it was a Ponzi scheme? Well, not particularly. No, he sort of, so like there's a wonderful interview which again we were talking about Twitter. Vox did, a journalist at Vox. I think her name is Kelsey. If I'm blanking on her last name or her full name, accurate name at this point. उसने SBF के साथ एक Twitter DM मैसेज इंटरव्यू किया है, जो मैं लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, लोग पढ़ सकते हैं उसको. ही हेटेड ऑन रेगुलेटर्स, ही केम बैक फ्रॉम इट द नेक्स्ट एंड सेड नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था. उसमें उसने कहा कि छोटी छोटी अकाउंटिंग चीजें हम कर रहे थे जो हेरा फेरी थी, लेकिन वो एक बड़ा सा तूफान बन जाएगा, मुझे नहीं पता था. फॉर एग्जाम्पल, राइट, दैट्स हिज लॉजिक, or that's his justification for the Ponzi scheme that he was running. But on this, the Chapter 11 bankruptcy जब फाइल हुई कल, उसके अंदर जो FTX का जो लीड है जो इस हैंडल करेगा इस बैंक्रप्सी को, he is the Enron expert. और उसने खुद कहा कि this is the worst thing he has seen in his life, in terms of the lack of accounting controls, in terms of the fraud that has happened. $300 million का इथीरियम जो है उस एक्सचेंज से चोरी हो गया in the last week, in terms of the collapse and the nature of the collapse. So it is a huge story. It will continue to be a huge story, and he and crypto is the loser for me this week. Moving on to winners, Amber, who No, I have a question here. I just want to say, okay. is this like the end of the dream for it isn't just bros, but is it the end of it's like the big dream, right? Because I saw his lifestyle, gaming, sleeping on bean bags, making money, said he'd give it to charity. So it's kind of like the end of a dream for these young people who think they can change the world, with the power of their mind and the nerdiness of how they approach money and kind of, so that's my question here. Is that I think so. I'll give you my own personal example, right? 2007 में जब मैं A levels करके I went to the US, I wanted to be an investment banker. I went to Bentley University. 2007-8 financial crisis happened, and I was dejected and angered by what I was reading and understanding about how investment banking or financial system worked globally, right? And the scale of the collapse. So I never went into that field. I think a similar reckoning will happen in this, because right now you not only have this collapse of FTX, but everybody from Facebook to Twitter to name your tech startup that was sort of everybody wanted to work there is laying off people. राइट तो ये इंटायर जो टेक बूम था सस्ते पैसे के ऊपर, एक्सेस टू चीप कैपिटल पे, ये खत्म, उसका एरा खत्म हो रहा है. तो हम उसका इम्पैक्ट देखेंगे इन टर्म्स ऑफ अ जनरेशनल शिफ्ट. लोग कहीं और कुछ और काम करने की कोशिश करेंगे. क्लाइमेट में मेरा दोस्त है फॉर एग्जांपल, एक जर्मनी में इज अ प्रोफेसर, वो मुझे बता रहा था कि अब उसकी जो क्लासेस हैं, the most sought after classes, the most oversubscribed classes are classes related to sustainability, climate change, or material sciences related to climate change, right? तो ये एक shift हमने generationally colleges में देखना शुरू कर दिया है. तो that I think this is the end of that era, कि जो 15 साल का era था जहाँ tech and changing the world through tech and this belief that tech is the end all be all solution for everything. I think that era is over. पैसा भी नहीं है for the time being, at least access to cheap capital will be a problem. Right. So I think this sums that up. And I'll give you one last example on SBF and the scale of the hubris, right? You've raised money for stuff. I've raised money and talked to donors for stuff. It's a very nerve-wracking experience, right? When you're even for a small check. SBF for Sequoia Capital, hundreds of millions of dollars on the line. In that meeting, he was playing a video game and they still gave him money. Can you imagine? Right? That's how he was approaching, and that's how easy access to money was in this era. And I will also point out here, Uzair, that that's also not just how easy it is, but I think it's just a very, very much it's seen, in my circles, is very much a sort of male approach. And I think just one more line on this, capitalism is a real evil. And I hope people realize that. But let's move on. Well, that's a longer debate we should have, because I am an unabashed capitalist. But my winner for this week, and then we'll come to your winner, Amber. My winner this week is the Artemis 1 launch. NASA launched a spacecraft that will circle the moon, come as close as 60 miles.
It is an unmanned mission, but it is being seen as the beginning of another attempt to have a manned presence on the moon and use that as, exploring the solar system onto Mars and further beyond. I'm a bit of a space nerd, and there are a lot of people who will say कि दुनिया में इतने मसले हैं, तुम पैसे खर्च कर रहे हो स्पेस पे जाने के लिए, लेकिन ये एक इंसान के अंदर हमेशा से एक आस रही है सितारों पे पहुंचने की. इसकी वजह से प्लेन्स बने, इसकी वजह से रॉकेट्स बने, इसकी वजह से हमने जो है अपोलो कैंपेन भेजी चांद पर. आई थिंक इट्स अ बिग विन दिस वीक. और स्पेस और जो हमने पिछले 6-8 महीने में देखा है in terms of the James Webb Telescope, the mission to Mars, etc., the pictures coming out of that, I think this is part of that, and this is super exciting to me, and it's a winning story of the week. Okay, all right. So the tech bros जो हैं उनके लिए तो शायद it wasn't such a great week, but space bros, the final frontier, it's been a good week. For me personally, my winner of the week, and it's again from the cultural world, and I think it also speaks of how a lot of Pakistani artists do so well abroad and not so well in our country, is Arooj Aftab, who is a singer from Lahore. She has won and been nominated for a Grammy for the second time in a row. Uzair Na. Her album was actually, her Vulture Prince was actually also recommended by Barack Obama. She kind of, that blew up for her career, blew up after that as well. But I will say it isn't just because Barack Obama. Beautiful, beautiful music, interpretations of Pakistani ghazals. And in this case, Jo Uzair is a collaboration with an Indian origin artist who is Shankar. Yes. So my winner of the week is Arooj Aftab. So on the one hand, we have the censor board being the loser. I think we can collectively agree, but it shows Arooj's success, shows the power of art, the power of culture, and the soft power in terms of pushing what many in Pakistan say कि हमारा narrative नहीं बिकता. ये Arooj जो हैं is a prime example of when you let artists do their job without shackling them, they can do a whole lot. So that definitely is a winner. Amber, that wraps up the episode for this week. Again, to those of you who joined, thank you for tuning in. I hope you like this discussion. Subscribe, follow, tweet at us if you want us to cover different topics. But we will see you next week. Khudafis.